and copy our previous model files into this copy. Temperature associate temperature but they need to copy. Just make me $40. फाइल कॉपी करना है यस यस एक कैड और एक यस यस सॉफिस्टिक यस यस So in the folder, I copy double click on SSD first. Socket flush to open. To go for live load definition now, right? So step in the approach. Let me show you. So fine. So live loads you need to create one TD, and from the reference file that you already have, just pick up the live load template and these modules. So preload ASC. So you'll find it over here in template, the third module to up to this maximum 6, 7, 8. So you should select up to the end, that is line 140. From line number 41 to line number 146, simply copy it from here
line number should have plus prop template to line number one. This should be sorry, this entire file control A, copy. Workshop and center. Yeah, exactly. So that entire file you can simply copy and paste over here. Next table. इसमें न्यू नहीं आता है ये हाउ यू आर गोइंग टू न्यू थर्ड टास्क ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट और वो ऊपर ही आता है अभी नया टेक्स्ट है तेरा भी ऊपर आ रही है वो नहीं आ रही टेम्परेचर ही सर वो वैसे नहीं आ रहा है वो ऊपर ही आ रहा है कहाँ पे ये ऐसा ये आप लोड के साथ CSM राइट क्लिक इंसर्ट टास्क हाँ तो कैसा टेक्स्ट एडिटर सेम हाँ ऊपर आ जाता है अच्छा तो इसको कर सकते हैं ना करो ना अच्छा फिर ठीक है हाँ क्या बोल रहे हो एक्सपोर्ट करो सॉरी मैं कुछ तो चेंज करना पड़ेगा 8.2 कैरेज पे स्टोरेज साइज कृष्णा ने भी उसमें माइक्रो नाम से प्लेन मूविंग ये भी तो नहीं प्लेन सेंटर कृष्णा कैसे भेजेगा मैंने एक फोल्डर भेजा श्योर हाँ उसमें सबसे ऊपर पे टेडी बना नहीं आ रहा कितने टेडी को बना कृष्णा सेंट वर्कशॉप डॉट सिट ना हाँ बन गया हाँ फ्राइडे बन गया है जल्दी बनने जल्दी भाई चलो आउटलुक कर नॉट डिलीटिंग वो टेडी बना नहीं आ रहा सर के उसमें कुछ ऐसा कुछ इशू है वो वर्कशॉप वाले फोल्डर पे अच्छा
Create a new task for landlords. Down, drag it down. Yeah. So if you integrate this data, what it is, so this is basically four-stepping approach for landlords. Okay, in this data, if you see, it has got first is the template, and that template asks you information regarding the axis, okay, along which you case. Okay, so what are the requisites for this required things that we must understand? Have Excel like this, okay, and how this load stepping is defined is you will create an axis like this, okay, maybe along the center line or along one of the edges and all direction along which my load should move. Okay, that you'll have to define an axis. Second step is you'll have to define load trains. Load train stands for let's say class AA and 70 are in our case. Okay, so for as per IR6. Third definition that you'll have to do is you'll have to select this load train and place it in your lens. Let's say example 101, wherein you are placing it over here. Lowercase 102 will be shifted by 1 meter ahead. 3 will be further more shift. So on and so forth. You will create around 50 load cases wherein your load train will be shifted ahead. There will be an increment of 1 meter each. So your requisites are what you need is you need to define an axis to what you need is you need load train. You need to create in a load case, keeping those load trains. One load train or combination. So you want two classes, you can put them like that. You want MTR and the classes that you can do like that. Then what you need to do is, so you have created already the load cases for, then you need analysis engine. So if you look over here, here is task wherein you say that Sophie load. Sophie load is a task wherein you define your loads. Okay. So for example, temperature loads also we define Sophie load. The same module we are going to use. So here what has been done is LC number 301 and type is Q. If I go to help LC number 301, definition of load case, and type is Q, type oblique action of load case. Q is for variable loads, okay, by default. Then comes TRAI, definition. So we need to that definition is now going on. So type is user defined. So if you just scroll down, okay, there will be several list of different types. Okay, so as per codes, also you can define right table that pops up. See that these are all types. So it is user defined. That means that LM1 set here LM1, LM2, and that kind will be generated. So what load train is? So there might be, but there are some limitations. Here, nahi hai, nahi. So what basically load train is? Load train is nothing but series of concentrated point loads separated by some distance. Okay. Case what has been done is if I just show you carefully the input.
of mass center. As per IRC, it is 1.2 meters. So 1.2 meter. Velocity, if you have that velocity V is speed of phi value, phi. FIS is explicit impact factor for shear. Con. Xcon is minimum distance for repeated load trains. Okay. So it should repeat after every 20 meters. Okay. And WIDT is load train 2.3 meters for class A. Now comes TRPL. TRPL is point load of load train. It is every point load separated by a distance. So two wheels. So P is 27. Okay, vertically downwards. That is value for braking load, horizontal direction is 5.4 here, 1.8. So here this B is distance of wheel across the length, and this A value is distance to the last load of the train, the previous axle. So if you go to the next axle, 27 kilonewtons, 5.4 kilonewtons, and minus 1.1. If you go to IRC6, you will find that 3.2 meters, 1.2 meters, 4.3 meters, so on and so forth. The entire definition of. Now, this is something that I never defined it. It has, so I simply, this is class A definition for me. Every time I give it. For example, you have got special vehicle load now. Okay. That time, let's say that there will be additional, rows, similar input, let's say LC303 type is Q, TRAI, this all remains almost the same, except the width and all changes. And you will have to put in additional concentrated point loads using this command TRPM. Definition, this is LC302, this is 70R. Okay. So these are the point loads for each of the axles and the distance by which it is separated here. Okay. So this is definition of your class A and 70R. Even second one क्या ये जो दिया breaking point. Then comes you have defined now your load train. Then comes lane number. Okay. Now you have defined your load train and you should have defined an axis in your Sophie Plus. Or you should have defined an axis previously about which. So what I do is I go here in Sophie Plus. Okay. What I do is I have my AutoCAD line over here. See this, which is at it is my alignment basically. Okay. So what I can do is I can go to this axis, right click, create axis from 3D AutoCAD curves, and I give it a name MV. I say okay, and I click on this curved line. Why I give that name as MV, I'm just exporting it now. That MV is there in the database. It is still not there in the database before any export. And now I go to SSD. I focus on my live loads alone. So I go to live loads here. And here is the axis name it asks for is MV that I give. That further when I use this axis, okay, I use that axis over here directly. So lane number, so it is MV will be referred to. Okay, so our direction will be about MV now. So if you look at what lane is, width of traffic lanes basically we are going to define. So this is our primary lane, primary axis rather, it's not yet a lane. And this is our lane, which is axis dot one, or we can call it MV dot one. Okay, which is YLA and YRA. So basically how it has been defined. YLA stands for left value at start and YRA stands for right value at start. That means if you have got this axis,
So this is now MV. Find a length onto, let's say, right hand side, offset of, let's say, 5 meters over here, and the width will be, let's say, it's 2 meters. So there will be another offset of 3 meters over here. So your axis will be defined something like this. So the lane will be defined something like this. So this was your reference axis MV in the center. To define lane, what you need offset of the right of the lane and left of the lane. If you want to go on the left, then these values should come in negative. Now, in this case, if you look over here, YLA and YRA, okay, in this case, so CW is of the carriageway divided by 2. Yeah, upper. All these variables are defined over here at the top. Let me just brief them. I don't want to brief them because one by one as they come, then we is width of the carriageway, which is 8.2 meters. Maybe here we can change that as per what actually it is, but it should be 8.2 meters only. So 8.2 by 2 minus 1.5 and has got negative sign. Here is the right offset, which is 8.2 divided by 2 minus 2.45. That means, can you please tell me? 4, right? So it is somewhere close to 4.05 minus 4.05 onto the left hand side. And this is about my center, that is the left lane, basically. Okay. Coming 4.2, 4.1 minus, yeah. बोल्डर बोल दिया आपने शायद वो आपका जो वाईएलए के बाद है दैट इज द लेफ्ट क्रैश बैरियर के पास 3 पॉइंट हाँ क्रैश बैरियर के पास वाला लाइन है इससे 2.3 मीटर इधर टुवर्ड्स द कैरेज वे इज वाईआर है इसलिए माइनस बाहर है ठीक है Yeah, the Bracket minus के is बाद। outside. Yeah, the minus is outside. Yes. तो वो 2.45 पे 2.3 हो गया Okay. दिस इज द विड्थ ऑफ द लेन Here and we say execute load, Sophie load, and let's see where our axes are getting modeled. As a result, so then have a look at these numbers. Okay. This what is my lanes are getting generated. So I here and I know what it is. So echo, if I go to help, I didn't help print out option. Okay. And I say OPT opt LANE. Currently, if I look at here, there is no output in my graphics anywhere. So I just requested output for lane definition and I gave it a run again. Again. So that yes is not sufficient then. It's my 1, 2, and 3. Saying that is on to the left.
right? लेन एक इनपुट हो गया, दूसरा वाईयर भी इनपुट है हमारा ना, कितना उसका ऑफसेट रहेगा हमारा लाइन। इस लेन को डिफाइन करने के लिए हमने उसको ऑफसेट दे दिया. I could do is I could have that my axis instead of at central alignment, I could have it here on one edge or the other edge. It is all about how much offset you give to create the ब्राउन लाइन है वो क्या है? brown line. Yes. और ये that is the center of the lane, huh? That is center of the lane. So this is one. थोड़ा एक्सिस जो है मेरे ख्याल से 0 वाला एक्सिस है। So what we do is we go bit step. Is assigned, which will not be there now anymore database. So what? So it takes time, and MV is not available anywhere. एक्सेस बाहर भी एच पे भी बना सकता हूँ, That's फिर वहां पर कोड पे वैल्यूज अलग it is करके all लिखूंगा। about your success. Okay. Edges का दोनों edges. Edges का लेन के लिए wheel is a different thing. तो बस लेन बनाना है ना, तो लेफ्ट और राइट को ऑफसेट बदल दो. एक्सट्रीम केस में लेते हैं ना, कि एक्सट्रीम केस में जो है कि मोमेंट आएगा, इसमें थोड़ा मोमेंट आएगा, तो मैं व्हील को प्लेस करते हैं, तो व्हील को हम बोलते हैं कि ये एक्सट्रीम में यहाँ रहेगा, उसको फिक्स कर दिया, फिर अंदर वाले हिसाब से रहती है। इसमें भी तो व्हील को फिक्स करना पड़ेगा ना, नहीं कि अपने आप वो मूव करेगा मैग्नेट देने के लिए। व्हील को ऐसे हम तो गड्डी पूरी दौड़ा रहे हैं अराउंड द लेंथ. नहीं आए, आपने सपोज करो कि आपने लेन डिफाइन कर दिया, अब मेरा जो है कि गाड़ी कभी मेरी मैक्सिमम देखी एच पर रहेगी, एकदम एच पर रहेगी, और एच में भी डिफाइंड है कि अगर मान लो क्लैशर है तो 0.5 अंदर रहेगा, 70 है तो वो उतना अंदर रहेगा, तो हमको प्रॉपर्ली हमको व्हील को डिफाइन करना पड़ेगा ना, उसके एग्जैक्टली थोड़ा होगा, व्हील की पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। वो भी कर रहे हैं इसमें आगे जाके जब प्लेसमेंट जब कर रहे हैं ना, वो भी एन एक्सिस यू कैन डिफाइन ट्रांसवर्स पोजीशंस, वो मैं दिखा था, उसके ऊपर आएंगे तब उसका डिस्कस करेंगे. यहाँ पे केवल लेन डिफाइन करना है, बस लेन डिफाइन, इसके अलावा कुछ नहीं. लेट्स डिस्कस दैट प्लेसमेंट ऑफ व्हीकल.
So this is 1, and this 0 is then our MV. Now what I do is I go back out and I go for this. क्या किया कमेंट आउट कैसे किया आपने Alt C. ऑल्ट सी से ही कमेंट Yeah. बनता है और रिमूव होता है Remove that. Now what I do is I go and I say is bits of load. Here. It's 2. Now I go back again and I go for, I comment this out and I activate this. जिसमें ज्यादा एग्जेक्ट करेगा वो, क्योंकि बेसिकली अगर हम लेन डिफाइन नहीं करते हैं तो कई बार क्या हो सकता है कि हमारा एक ही लेन के अंदर दोनों व्हीकल आ जाए। जैसे कि डिफाइन होती है ना कि एक लेन में तो मैक्सिमम क्लास के 2 व्हीकल आएंगे, 70 के आएगा। अगर हमने प्रॉपर्ली वेल डिफाइन कर दिया आपने जो है कि लेन को जो है, तब हमारा 70 का है तो दूसरे में नहीं जाएगा या क्लासेस के अंदर नहीं एंटर। नहीं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। देखिए कि अब हमने उसके लिए लेंस डिफाइन कर दी। 3 में भी क्या है कि जो मेरा जो फर्स्ट केस है जिसके अंदर मेरे को अभी ये 2 लेन का हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विड्थ एज कैन डू इट लाइक दिस। ये पैरामेट्रिकली करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डाला। प्रैक्टिस व्हाट आई हैव बीन डूइंग इज कि मैं ऑटोकैड में वो क्रॉस सेक्शन करता हूँ, फिर एक 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 गिनता हूँ, IRC6 से यहाँ पे कैसा कैसा प्लेस होना है वो निकलता हूँ, और फिर सेट्स की सीधा यहाँ पे वैल्यूज डालता हूँ, -2.4 -3 -10। एवरीवन स्ट्रेस किसी को जरूरत है क्या इसकी जो आपने अभी किया है, जो लेन डिफाइन किया लेन टू लेन के अंदर मेरा व्हीकल प्लेस है। नहीं, अगर हमने इसकी जो है जब व्हील जहाँ मूव कर रहा है इसका हमने वो डिफाइन कर दिया हमने जो है कि हमारा एसी कितना डिस्टेंस पे रहेगा, तो वो अपने आप ही वो गया ना। वो सोफिस्टिक के लिए सर इनपुट है ना, सिंटैक्स रेफरेंस लेन का रेफरेंस सोफिस्टिक के लिए। लेन जो डिफरेंस चाहिए था वो ऑथेंटिसिटी चाहिए होता है। ऑथेंटिसिटी के लिए तो उस एक्सिस से हम कितना सेंटिंग रखना है, कितना सेंटिंग नहीं रखना है, उसके लिए होता है। सही है। ना कि उसको लेन को व्हीकल को प्लेस करने की, तो व्हीकल को प्लेस उसके रेस्पेक्ट में एक व्हीकल कहाँ आएगा दूसरा व्हीकल कहाँ आएगा वो उस पर होता है। ये क्या है कि ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे लोड केस, ओके, 1,01,000, ठीक है, स्टेप के लिए मैंने बनाया, जिसके अंदर बोलता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पे मेरे को उसका रेफरेंस देना पड़ता है, जो कि मेरा जो फर्स्ट जो एक्सिस जो फर्स्ट जो लेन जो बना है MV.1 जो बना है उसके अंदर मैं उसको प्लेस कर रहा हूँ। ये रेफरेंस तो मेरे को देना पड़ेगा। इसका डिफरेंट तरीके का इसका तरीका वैसा है, इसका तरीका डिफरेंट है कि इसको इस तरह देना पड़ेगा। आपको कहना है कि आप बिना आपको कहना है कि बिना इस आपको उसको बाकी दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं चाहे मिडास ले चाहे ले लो वो डायरेक्टली उसको प्लेस तो करता उसमें है। गेन होता है वर्ड उसमें जो है, लेकिन अल्टीमेटली एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितने कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो मैं बोलूंगा सोफिस्टिक का रिक्वायरमेंट है, ये बोलूंगा आपको चाहिए तो आप वैसे भी प्लेस कर सकते हैं। So in this case, from line number 54 to line number 61, what is being done that I'll explain. Now, keep your load train in numbers. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लूप चला है, ठीक है, y has got an input of NTP. If you go and check what NTP is number of transverse original position for transverse loading. That means inner has got this width and vehicle has got lesser width. Then you can transversely place it in that one like that. So
remaining lane width divided by 3, whatever the value comes, that will be placed. So this is not accuracy and to just automatically code as per IRC 6. Okay. So loop X has got input of LASS is for vehicle load in meters plus class A vehicle length in meters divided by vehicle step size in meters, and that should take whole. So basically LASS is how many steps you are going to have along the length of your structure. LC is getting generated, okay, or storage load case that has got first number as 1,01,000 plus X. Okay. X is length of your structure, let's say. Okay. So that will be number of times the loop plus 10,000 into the transverse positions, basically. So there will be, it will go from 1 and 2. If I give this a run, load case, okay, I'll just show you all, how that 1,01,000 comes and lane 301 in reference axis, the lane that we defined, which is the first lane, and dx is an increment. So dx is global or local shift of loading. Okay. So it will be shifted by SS. SS is another over here that this vehicle step size, that is 1 meter. Okay. And dy, number of transverse position that is going to take inside the lane. Let us run this and have a look at it. Or what I'll do is, for the sake of simplicity, let us run this 70R only. Okay, so that will have only one vehicle. So what I'll do is I'll just comment this out. And so I now go to home and I go to WinGraph. I go to the top view. I go to loads, input loads. I go to all loads, LC. 2,01,000 is my first load case. Okay. 2,02,000 is this, 2,03,000 is this, 2,04,000 is this. So it is shifting ahead by 1 meter in each of the load. लेन के अंदर मूव कर रहा है. Lane के अंदर ही move करेगा. Now, if you can have a look at it in this way as well, like this. Okay, it is shifting ahead. Now, if you look at it here in the top view, it goes up to like 35, 36, 38, and now it jumps into 2,10,001. You see here. So 38 was this, 2,10,001 is this. It has shifted to right hand side of it. So it goes now further ahead. And again now once it goes to 2,38,000, there is 2,20,001. It has further shifted to this side. So in a lane, it is trying to adjust its positions in the transversely basically. But it is not, so it is just to accuracy that nothing should be left and you should have vehicle on all possible places inside the lane. That is the only. बहुत से कितनी किस्मत है ये अगर एक बार लोड किया तो मान लो 50 मीटर लिए रखेंगे तो देखिए ना 50 के 50 बनेंगे और जितना ट्रांसफरली भी अपना मूव कर रहा है. ट्रांसवर्सली भी मैं उसको करता हूँ अभी ये केस में. अभी लेट्स से what I do now is I go back here and I say that NTP value instead of 3 is 1. Okay. Shifts in the transverse direction there. ट्रांसफर में एक बार में कितना इंक्रीमेंट होगा मतलब जैसे पहले शिफ्ट में कितना जितना लेन का width है minus width of the load train divided by number of steps that I am giving. मतलब मैंने अगर तो सपोज 1 मीटर बचा तो डिवाइडेड बाय 3 तो 3 टाइम्स आएगा. इन्फ्लुएंस साइड से नहीं होता ये नंबर ऑफ स्टेप्स तो होता है. वैल्यू के बहुत इतना रिक्वायरमेंट नहीं है इतना कोई जरूरत नहीं. इतना भी जरूरत
फाइल मैंने बना के रखा है. So yeah. Any किसी So it goes in two ways. Okay, whenever so understanding this variable is a bit difficult. Same time, it is very handy that everything is made as per the standard that is required. Automatically, you need to simply copy and paste it and give it a run, and output will such a file for as well, for 4 lanes as well, for 5 lanes as well. You need to simply change the template inputs at the top, and that should do your work. And what results you get, okay, after this analysis, okay, after executing these files, are available in WinGraph directly. So debugging is, what understand, through WinGraph instead of now. What I do is run this entirely this Sophie load, and that gets generated. So I got classes placed like this in 2 lanes series, and I have 40 load cases over here, 41, 42, 44 load cases for class A. Then comes my, transfer shift by 300 mm, say, and this is again A. Okay. दोनों vehicle shift हो गए, right? Not just one. दोनों shift. That So it is not necessary कि अगर एक जो लेन के 270 नहीं आ सकते वो कैसे सेंसिटिव करेंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं सर. तो हमने 2 चीजें डिफाइन की कि जब कॉम्बिनेशन जब बना रहे पहले जो लोड केसेस जो उसके अंदर हमने 2 क्लासें यहाँ पे रख दी, कॉपी 301 एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2. हमने बना दिया तो उससे बनाया. 0.5 और हमने दूसरा जो बनाया लोड ग्रुप, जो बोला कि बस 70 एनालिसिस करना है, एक नहीं ये बनाया. हम दूसरे में रख और एक लाइन मारता मैं, समझ गया और मैं यहाँ पे अगर रखता 301 जो मेरा लोड ट्रेन है इस मैं समझ गया एक लेन हमने डिफाइन किया तो 70 आ रही है बस बाकी दोनों में मैं क्लास ही रख रहा हूँ तो अपने आप क्वेश्चन जो है एनवेलप बनने का जो है वो आप उससे निकाल के उसमें दोगे मैं लोड ट्रेन को प्लेस कर इसके एक बार चलाना वो लोड. हाँ जो लोड तभी चलाए अभी चला थे वो चलाने 70 वाला सॉरी 2 क्लास है 2 क्लास. यहाँ पर लिखता हूँ 1.5 this -1.5 will take you इधर अच्छा बट इसमें ऐसे चलना हाँ फिर वापस दूर में चला गया ये इसमें कोई ट्रांसपोजिशन हुआ नहीं. So we have got only now load cases. How many numbers? 1, 2, 44, and 2 lakh 1 to 38. So maybe 100 in numbers, less than that, right? 80 or something, 80 to 90. 44 यार. So now what I do is नहीं जब 3 था तब भी केस 4 बन 44 थे. what now I need to further do is कैरेज भी by 2. I need to analyze these loads. हाँ
I have ये क्या है? generated them. and then carriage I have defined my loads, but I second haven't wheel analyzed them yet. So I need to analyze them. second wheel So I have got an ASC here, which is my advanced solution engine, and I simply give it a run. I say 0.5 execute ASC. plus 1.8 plus 2 As I do it, I can back here in my visualization and see here 1 lakh 1. So this entire thing I can see over here. Load numbers from 1 lakh 1 to 2 lakh something. I can also have look at the results of this here in bending moments. For example, forces, My, LC, and I can have look at the results here like this. And let me just increase the sections at which I am looking at the results. Simply runs like this, changing in the like this. Clear? एक चीज और ये तो ब्रिज अगर छोटा है तो मान लो बड़ा ब्रिज है आपका जो बड़े ब्रिज में कई सारे जो है कि आपके ट्रैक आ सकते हैं जो दूसरा ट्रैक आएगा जो है तो उसमें जो है कि हमें जो है कि ये दिखना कि आगे वाले का जाएगा ना थोड़ा सा तो ले तो मैंने डिफाइन आएगा पीछे वाले हो जाता है लेन तो पूरा डिफाइन होगा ना तो वो पूरा कैसे कैरेज वे डिफाइन कैटेगरी करेंगे आप उस पूरे कैरेज वे में जा रहा है मतलब आपको वाला कहना है कि इसके पीछे जो चलेगा इसमें हमने ये डिफाइन किया है यहाँ पे लाइव लोड्स के डेफिनेशन में एक्सकॉम का जो वैल्यू है मतलब मेरा ये लोड ट्रेन खत्म होने के बाद 20 मीटर के बाद मेरा अगला लोड ट्रेन चालू होगा। हॉरिजॉन्टल कोर्स दिया हुआ है दिया हुआ 20% दिया हुआ है लेकिन जो बीच वाला पैकेज आएगा उसका केवल 10% ही लेते हैं और साइड वाले 5% लेते हैं वो सब कैसे करो उसके हिसाब से ओके तो वो केस में मेरा 1.2 नहीं उसको मैं एक ब्लॉक में डाल सकता 8.2 divided by हूँ it is मतलब कि 4.1 क्लास ए जो है अगर 2 उसके पीछे में दूसरा क्लास ए का ब्लॉक डालूंगा जिसके अंदर में उसको वो जो वैल्यू है वो एडजस्ट कर दूंगा कॉम्बिनेटिव नहीं होगा 1.8 plus ये यूज तो करते आ रहे हैं ऐसे आई बीन यूजिंग दैट इन प्रैक्टिस ये यूज कर रहे हैं या दो 0.5 how much it is क्या यूज कर रहे हैं ये वाला या दो क्लास डिफाइन कर रहे हैं दूसरे वाले के अंदर तो अब मैं क्या करता हूँ मुझे कितना हुआ था कि ये जो सामने जो दिख रहा है उसको मैं क्योंकि यही रिपीट हो जाता है ना व्हीकल तो उसको एक ब्लॉक में डाल देता हूँ डिफाइन जो ब्लॉक एक्सिस से क्लास इसका लेंथ कितना तो उसको उसके पीछे पीछे कितने भी लेन टू क्लास से है तो वन लेन का लेना सेकंड का जीरो होगा कितने चला वो ठीक है और लेकिन जब इसमें बनता है अब तो करेगा वो जितनी भी लेना है आपके मतलब इतने एनवेलप करने के लिए जो आपका इसका ब्लॉक बनाया है विड्थ हम दूसरा ब्लॉक बनेगा जिसमें 10% हो गया फिर साइड वाला जो ब्लॉक बनेगा उसमें 5% हो गया कहीं 4-5 लेन की हो रहा है 17 एक क्लास से क्लास 3 क्लास आ गया बाजू वाले की जो 4 बाकी वाले जो 3 है उनका जो 5% आएगा इसके वाले 2% आएगी मान लो 150 मीटर होने जा रहा है तो वो सारे ब्लॉक 8.3 से ज्यादा कैसे एडजस्ट करोगे व्हील तो उतना ही रहेगा फर्स्ट व्हील to say that डिफाइन कर you got number of जिसके लिए आपको ब्रेकिंग का वैल्यू चेंज करके वहां पे डालना है अब तब ऐड करोगे आप तो इस टाइम क्योंकि आप अलग ऐड करने वाला बनाएगा उसका आप यूज करने वाले हो आप सेंटर in that case what you do is you take this same definition okay same definition block इसके बाद जो भी आएगा ये जो p का जो a का जो वैल्यू है let's say that you are going to break start after 20 meters in that case what you do is instead of defining this pp like this वो केस में ऐसा करो कि ये pp का वैल्यू भी आप 27 लिखो what I do is 27 right into 20% डालना था तो मैं 0.2 डाल दिया 0.2 यहाँ पे डालने की वजह से एक वेरिएबल बना 0.2 के लिए जो ऊपर 0.2 रख दो ताकि ये पूरा जो आएगा पहला नेक्स्ट इफ यू वांट 10% बस सेम चीज आपको नीचे एक बार रिपीट करनी है और वहां पे जो ऊपर वाला जो वेरिएबल रहेगा वहां जो मल्टीप्लाई होकर 0.1% मतलब 10% आएगा आपको भी 5% पे जाना है तो एक वेरिएबल में आप अपडेट कर दो वो नीचे वाले इसमें वो वैसा एंड ओनली 3 वैल्यूज taking values
for each of your cases 20%. ये मैं समझ गया, आप जो बता रहे सही बता रहे होंगे। हाँ। एक आप करके दिखाएंगे, एक हम थोड़ा हाथ पे प्रैक्टिस करेंगे जो है, तब थोड़ा मालूम चलेगा। अब ठीक है। इसमें अवेलेबल नहीं है। हम क्या करते हैं, जो आपका जो यूज केस जो रहेगा ना, मतलब when you start using ना, वो टाइप का भी दे देंगे कि मतलब कैसा करना है इसको। So उसके लिए भी ये काफी, but if you want to take percentages, then I don't think. ये उसको नीचे कॉपी कर 10% कर देना। डिस्टेंस तो आप तो वैसे भी डिपेंड कर रहे हो कि कितने बाल आने वाले, 20 मीटर्स के बाल आने वाले। 1.0. Because I have same vehicle to run along the entire lane. This is your position from your And that axis. is very common This case and very common use मतलब that. मेरा जो ये carriage में वाला 4 divided by 0.15 as first view. So what I now next need to do is And you live have load this and much of dislike it. Okay. Or Further, what I need is I need the envelopes. I need the critical results for this. Just one thing. Yeah. जहाँ आपने प्लस पी और जी ऐसी लिखा, वहाँ पे फिर से आपने axis. Hmm. फिटनेस कैमरा जितना भी हो, फिर से ऑफ कर दिया। मेरा एक ही लेना होगा। नो कंस्ट्रक्शन स्टेज में भी किया हुआ था। सही। That is not applicable for the post No. फिर वहाँ पर लिखेंगे axis to Not applicable. उसमें फिर से हम for every low stage that we have to define. हाँ, इससे every AC or अगर आप इसको वो नहीं या ऐसे से 1 balls donation और यहाँ पे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। So what I do it for further maximum, I'll just simplify this. So what is happening is, if I start showing you these automated scripts, you know, I have a realization that things are a bit getting complicated. My hands. Okay. So what I do is, I just copy a small from here. Let's say I take small code from here. C, and let me create, let's say, or not here, task, and let's say it is plus prog. दिया था यहाँ पर ये दिया था इसे वाली I wrote And graphically position. कर सकते हैं different vehicles और ये जो स्टेपिंग वाला ये नहीं कर सकते, आप ग्राफिकली वो जो देखने होगा। and vehicle
व्हीकल भी ग्राफिकली कर सकते हैं, no problem। वो भी हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में। सो इट इज चॉइस ऑफ द यूजर की जिसको जो भी यूज करना है। ओके मेरा एक डाउट है, yes। जो हम लोग लेन डिफाइन कर रहे हैं और उसमें व्हीकल डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या वो व्हीकल की जो व्हील है वो उस लेन के बाहर जा सकती है कि उसमें एरर बता देगा? एरर बताएंगे तो बाहर जाएगा। तो जैसे कि इसमें अपन ने विड्थ ऑफ क्लास ए की बात करें, तो विड्थ ऑफ द जो व्हीकल है 2.3 है, और हमने जो लेन डिफाइन किया है वो भी 2.3 मीटर का किया है। यहाँ से 0.15 और यहाँ से -2.45 वाला जो किया था। अच्छा मतलब आपको कहना है कि वो X बाहर जा रहे हैं फिर भी वो कुछ एरर नहीं दे रहे हैं। हाँ, एनटीपी आपका 3 था, तो उसके बाद शिफ्ट होने लेटरली शिफ्ट होने की जगह नहीं है। अच्छा तो शिफ्ट भी नहीं हो रहा होगा फिर, क्योंकि एनटीपी का जो फॉर्मूला दैट इज width of your lane minus width of your vehicle divided by NTP, जीरो हो जाएगा। वो एरर शो नहीं करेगा, लेकिन वो सेम रन पोजीशन नहीं में 3 बार रन करेगा। हाँ 3 बार तीन बार रन। और इसमें जो भी किया है इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे वहाँ पे देयर माइट बी सम एरर्स, वो तो मैंने है, it's not coming from Sofistik। So we need to now understand, okay, module maxima to combine our results basically. So maxima is a module that is used for combination of results. I do now is I keep all these live loads and all away from for now for some more time. Okay, just to simplify things, and as this is really very important, and I just realized that more the automation is the complexity realized. So what I do is I go to my system visualization and I go here to linear analysis, and from my linear analysis I give run to this, and I say that load case 1, 2, 3. 3 is not there, 1, 2, only 2 load cases. Okay, and I give it a run. It is crash barrier and wearing code. Only 2 load cases we focus on. So we go here in WinGraph, and crash barrier load is this. This is the value 439. I want to combine them. Okay. Also, I want to perform an envelope. I want to take an envelope of them. Okay. So what I do is I have created here a maxima module. Okay. At the bottom after my those lines, I give them the combination rule. I give it a combination rule number 1. So I say here let com be 1. Okay. So COMB stands for combination rule. Now further it asks me what kind of superposition it is, EXTR value. So whenever, if you have something as a rule, okay, in this CADIMP language, if let's say that COMB, and here COMB value is 1 here, okay, since I have defined it in a variable above, here is EX stands for kind of superposition, okay, and input is EXP, different rule like design fundamental combination, accidental combination. I, as a user, want to give all load factors and all. This is the idea. Now, base 2100. Base is base load case number. That means the generated combinations will be shown with an offset of 21. Okay. For example, of maximum my and minimum my, and the load case numbers getting generated will be 2129 and 2130.
from where this 29 and 30 comes is, it is a predefined value. So it is mentioned over here in this particular table below. So I can show you, but not necessarily that you need to see it every time. So further is type is none, title is any title that you want to give for now. So it is just an envelope I'm going to show you, or how Maxima works is my idea to show you. Now, what I do is I say that add Q, I say add Q, and FACU unfavorable factor is 1, and FACF the favorable factor is also 1. I say in next line 124 that LC, instead of 1 lakh 1, I'll select 1, and here I say that type is A1. So whenever, if there is a command, for example this LC, and if I don't write this NO here and write 1, that means it will take the first item of that command. Or if you're yet not, it is like LC. If I write like this 1, if I further write A1, if I further write 1, and if I write 1.0 further. So line number 126 stands for LC. The first input is 1. 1 goes for this number. Next input is type. So type is A1. Next input is FACT is 1. And there is no further input. That means this makes no sense. So this is as same as writing LC, NO, 1, type, A1, and FACT 1. Are you getting what I'm saying? So you don't need to write these items every single time. If there is no item written, then you need to simply follow the sequence that comes here at the bottom. So it takes up that input. Okay. So this is applicable for all lines. Wherever there is no such input, there is no such an item written, then the next item will be taken every time in that particular sequence. Okay. So I just comment this out. So what I do is LC2, I say type is A1. Okay. So 1 crash barrier and 2 is wearing coat. And I further say that SUPP, that is definition of the superposition. Okay. E type, the element type is beam, and the output that you are demanding is MY. Now I just give it a run and I see what is the output. So as a result, you see that in my database, I have got lowercase number 20. And if I look at CB, it has got bending moment 439 in this girder, and WC has got 285. Yep. So 2129 is taking an envelope of the two load cases above. Now what I do is I go back, and instead of this A1, I make this A2. And now I give a run. I go back and see that 2129 is 721, which is an arithmetic sum of WC and CB. So if you define them as same type, it takes an envelope. And it is an arithmetic sum. So this type A1 and A2. You don't need to remember. So maxima alone can take an envelope. Now, how it works? This was a very simple problem statement. So for example, you have got now so many live load cases. You can simply define them like LC case 1 lakh 1, 2, 2 lakh, whatever, I'll just say 2 lakh 44. Okay. With an increment of 1. Type I give it as A1. City as 1.0. It should give me an envelope of this. But now I take an envelope of my live load cases, but I want to have summed them up with my
crash barrier and that load case 1 and load case 2. In that case, what I do is type is A1 for 1 lakh 1 to 2 lakh 44. And what I do is I give it type A3 then. So now what this does is it takes an envelope of these live load cases and an arithmetic sum of load case 2 and load case 1. So let me show you an example problem in model 5. Here is a maxima, okay, of some project. What I'm doing is I'm saying add q underscore phi is my action type for my live load cases. FACU is 1.5, the unfavorable partial safety factor, and this is for impact factor that I was multiplying with 1. Load case 401 to 850 with an increment of 1 type A1. That means I was taking an envelope of these live loads, multiplying it by 1.5 and 1.18 plus here it is A2 now. Load case 13 was my footpath live load plus live load surcharge was from two ends coming from this end and this end. So that was load case 5 and 6 and I wanted to take an envelope of those two. So I used to take an envelope of this and arithmetically add to an envelope of these live loads and this footpath load plus envelope of the two temperature load cases which were first factored with 0.9 and then added above. So repeating what I did. Similarly, if I just scroll down, you can see that entire definition is of that kind. So here as well, you see envelope of the live loads. तो ये मतलब वेरिएबल यूएलएस का वेरिएबल का एक यूएलएस अलग से पूरा बना दिया दिस यू विल हैव यूएलएस का बना AG3 AG4 AG5 A6 EPC. इसमें कि you make a load case wherein you have all load cases outside your construction stages, apply their appropriate factors and store them in a load case. Clear? कहीं कहीं AG लिखा है कहीं कहीं A लिखा है इसमें Yeah, very important. Yes, very good, very nice. So what happens is that A2 is live load. If you see footpath live load, A1 is also regular live load. So live loads are conditional. The unfavorable may be achieved, unfavorable case may be achieved when they are present or when they are absent. But there are cases like SIDL, dead loads, which cannot be conditional. You have to them there. So if it is not conditional load case, then you give it AG. G stands for gravity. It will be there. So there cannot be a case wherein that load case is not a part of that particular and combination. Did not get A6 किसी ये वाले तो live load A6 कौन सा लोड है live load Neutral surcharge. ये वाला live load surcharge. जो आपका जो लाइव लोड है इसमें जो है कि एनवेलप होगा Define किया Envelope होगा. पूरा एनवेलप type of the message. बाकी जो नॉर्मल है ये When we daddy made आप ऐड करते हैं तो ऐड हो जाएंगे आप predefined हाँ मतलब ये क्या कर रहा है कि लाइव लोड का envelope प्लस AG3 मतलब आप क्या कर सकते हैं bunch of load cases. अच्छा आप क्या करते हो कि देखो अभी ये जो लोड केस 5 and 6 मेरे को इन दोनों का एनवेलप लेना था तो मैंने ये जो टाइप है दोनों का A6 डाल दिया. अगर मैं यहाँ पे टाइप A6 और A7 A8 डालता तो दोनों का समेशन ओके टाइप सिप कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो मैक्सिमम होगा वो ले लेगा ये जो अगर मान लीजिए मिनिमम मिलेगा. ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए देता है. अच्छा Maximum. Over here, you have defined EXTR. So, definition of superposition. Here there is an input for EXTR and the type of extreme value condition we have said that MAMI. MAMI stands for max and min.
So it should give us for both maximum and minimum. If it would have given that input as max, then it would have given only maximum. But if you see, once I executed, it generated for me my max, which is lowercase 2129, as well as 2130, which is my min. Now, what I do is I go back in SSD, and here I just something. So let's say what I just add here VZ as well. Okay, stored in lowercase number. So this is predefined. Starts from 21 to 32. 21, 22, N max, N min. 23, 24, V5 max, Vy min. 25, 26, Vz max, Vz min. Like that, it goes up to 32 because 6 into 2 is a number of degrees of freedom. So, and it is mentioned over here below. If I just scroll down, yeah, it's here. Yeah, it should be here. So this is for nodes. It's for string element. It is for no, here it is mentioned for beam elements. My bending moment my max and mean will be generated in 29. This will remain that whatever you have specified 2100. So my max will be 2129. My mean will be 2130. Similarly for Vz, Vy, so these are predefined auto set numbers for that. So what I do is now I just give this a run wherein Vz I'm expecting to get generated with an offset to 2100. So you see that it is 2125 and 2126 for Vz, and for Vz in shear force diagram, and this here. Now let's look at what that automatically provided code says and proceed with it. So this was just for the sake of explanation. So here it says that combination rule number 1. It is explicitly defined combination with base 500. Type is none. And it says add q underscore 1. FACU and FACF is 1. Okay. And it simply says superposition form 1 EXTR MAMI whatever. So it is live load case 1 envelope. So let me give it a run and explain you what it says. So here it says add q underscore 1, and further it doesn't say that load case from this to that and all. That means it is taking all load cases. This is the idea. क्या करने से इसने लिख लिया सारे लोड केसेस So क्या इनपुट दिया whenever if, so there are two ways of the definition. If you write add q and FACU, FACF, LC1, LC2, okay, and you give types, then it will get into those load case numbers. But if you don't give this input at all here like this, then it will take whatever is there to entirely, all load cases. So in this case, what has been done is it's not using any load case types. It is directly using only action. Now, why should you take superposition the envelope only is the question. So for that, तो ऑटोमेटिकली ले लेगा लोड केस डिफाइन नहीं करेंगे for सारे। that,
for that, क्योंकि हमने सारे सिर्फ ट्रैफिक फ्लो डिफाइन किया हुआ है. yeah, exactly. So for that, you see that the superposition is, it has mentioned ex already. Okay. So if I have this, okay, case and go for this live load analysis, okay, here, what it does is it understands that I have to take, and ex is that conditional one, and I have to take a superposition type basically. Okay. So it is mutually exclusive within the action. So under action Q, it is mutually exclusive. So if I go and have a look at of that 529, I should get some my value, which is whatever is critical of all those live load cases under Q underscore 1. That was the first two class A loads being run in 44. 521 529 है ये पहला केस 521 देखते हैं मैक्सिमम एंड बीइंग लाइव केस एनवेलप 1 522 मिनिमम हो गया हमारा फिर 523 हमारा जो है सीआर हो गया हमारा फिर 524 मिनिमम सीआर हो गया हमारा अच्छा मतलब ये सारे तरह के फोर्सेस मिला के 10 टाइप 12 टाइप फोर्स है सही तो सबको इन्होंने ये दिया हुआ है तो ये 1 से मतलब 1 से 10 होगा तो इन्होंने 5 से 29 में सारे के लाइव उड़ा सही क्योंकि इसका बेस 500 था हमने बोला तो बेस 500 चाहिए अगर मैं टेडी पे वर्क कर रहा हूँ जो टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं वो जैसे अभी इसने क्वेश्चन किया था वो टाइप का AG1 AG2 exactly so that is predefined है yeah so that is how I prefer working and I go with that particular format always so I can put A instead. Permanent load के लिए भी I can. AG डालना है आपको परमानेंट लोड आया तो AG डाल वो टाइप वो मतलब वो कंडीशनल और अनकंडीशनल के लिए बस it is always A and AG with number starting from 1 to 99 you can use A 99 similarly AG1 up to AG99 so I'll say that instead of going with this the automated sheet that I showed you okay which find maxima using this particular approach so this for simpler one to and I use it usually this is the one that I use okay कि इसमें तो जैसे लाइव लोड का A1 A2 दिखाया हुआ है उसमें मतलब 10 तो वही कर रहे हैं ना अभी ये देखो लाइव लोड का लोड केस नंबर 401 से लेके 850 तक जा रहे हैं मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 450 लाइव लोड के केसेस हैं सबको मैंने A1 ही दिया है A1 दिया सबको आया that too for MY MZ VY VZ whatever I asked for तो उसमें भी 10 तरह की वैल्यूज आएंगी 12 तरह की वैल्यूज आएंगी 12 तरह की वैल्यूज आएंगी यहाँ पे नहीं आ रहे क्योंकि मैंने ये जो आउटपुट जो मांग रहा हूँ मैं बस MY और VZ को मांग रहा हूँ तो 4 ही तरह के आएगा अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं डिफाइन करता है सर तब वो जो ऑटो में उसका जो डिफॉल्ट है वो 12 तरीके फिर 12 आउटपुट कर देंगे बहुत लेकिन ये है कि ठीक तरह तो अगर इंटरप्रेट कर रहा है तो बहुत बढ़िया है तो बहुत अच्छा MY और VZ चाहिए इसलिए मैं बस MY और VZ को आउटपुट मांग रहा हूँ मैं सारे आउटपुट्स नहीं मांग रहा हूँ इसलिए yesterday हमने इसको टॉर्शनलेस किया है कि टॉर्शन किया है with torsion could also be एक्चुअली तो टॉर्शनलेस करना चाहिए बट ही सेज कि इन्होंने कभी ऐसा किया बट हम ट्राई टू मिक्स कर सके वेट तो सर्वर स्कीम में टॉर्शन विद टॉर्शन करना ही जरूरी है इस करके उसमें लॉन्गर मोमेंट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा यस बट यू आर बीइंग डायरेक्शन सेकंड मेंबर है सर वो क्या नहीं
I got a Nice to people who क्या problem greatest platform. And मैं carries it with distribution कैसा है प्रॉपर थोड़ा नहीं हो रहा हूँ FEM का concept कैसे लग रहा है? 5-6 मतलब वो breaks कैसे मैट्रिक्स कैसे बन रही है तो भी नीचे तो कुछ दिया नहीं आपका क्वेश्चन क्या बनेगा अप एंड डाउन नीचे कन्वर्ट हो Skew slab में ज़्यादा लोड स्ट्रेट का rather than inverter में. हो गया कि बहुत सारी लोड केसेस आते हैं मतलब व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड या वो एक पुराना तरीका था ठीक है हम स्टेप्स बनाते थे that one इन्फ्लुएंस लाइन इज अ बेटर वे टू okay, let's. So for influence lines, okay, so I'll say, लोड स्टेपिंग जब करते तो बहुत सारे लोड केसेस आते हैं, यही आपको नहीं. But sir was saying कि बहुत सारे रिजल्ट जनरेट होते हैं, that can be controlled using maximum. से मल्टीपल स्पैन है 3 स्पैन कंटीन्यूअस है तो उसमें अगर स्टेप करके लोड लगाओगे तो वो आपको सही रिजल्ट्स नहीं देगा ठीक है मैक्सिमम चाहिए अगर डबल स्पैन चाहिए तो आपके अंडरस्टैंड शुड नॉट बी लोडेड तो इसलिए इन्फ्लुएंस लाइन बेटर Okay. लेकिन जो मैं ये जो इन्फ्लुएंस लाइन से निकालते हैं और इसमें निकालते हैं ये सब कुछ निकाल रहा है इन्फ्लुएंस लाइन भी निकाल रहा है और शैडो और अलग भी चीज निकाल सकते हैं नहीं निकाल रहा लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इससे इट इज डिफरेंट बट अगर 3 स्पैन हो गया या स्पैन हो उसमें डिफरेंट हो जाएगा 3 स्पैन है आपको मिड स्पैन में सैगिंग चाहिए तो योर एंड स्पैन शुड नॉट बी लोडेड तो इसमें तो ऐसा होगा नहीं इसमें तो आप स्टेप्स चलाओगे स्टेप्स पहले तो क्या वो काउंट करेगा हॉट के सेकंड के लिए वो भी कैसे लेगा यार वो ऐसा तो कोई सॉफ्टवेयर इतना मेहनत पे प्रोग्राम बनाया है अगर वो चीज काउंट कैटर नहीं करेगा फिर तो बेकार ही है तो बेकार कहते हैं सर आप इनपुट क्या दे रहे हैं वो देखिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो जो है मैक्सिमम जगह सारे के सारे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे जगह किसी इन्फ्लुएंस लाइन से अगर मान लो मुझे 10 रिजल्ट मिल जाए इसमें मुझे 1000 रिजल्ट मिलेंगे वो 10 रिजल्ट भी उसका एक पार्ट होंगे जो मुझे उससे आएंगे ये बड़े स्किल में आ रहा है जैसे फाइनल एलिमेंट्स करते हो ना लोड स्टेपिंग जैसा आप स्टैट्रो में कर सकते हो. स्टैट्रो में आपने देखा क्या कि वो लोड में लगाते हैं और ऐसा इंक्रीमेंट कर कॉम्बिनेशन मेरे को क्रिएट करना है. Expense are not loaded in that case. and by default software will need है ना? it's there if you use in or something. ये लाइन करने अभी वही कर. Take care of. Okay. Let's move on to the मिडास में ISD वाला जो है वो मिडास और स्टाइल में रिलेज बनाते थे ठीक है वो FEM वाला कॉन्सेप्ट इसमें कैसे आएगा उसमें हम लोग रिलेज नहीं बना रहे डायरेक्ट डायफ्राम से direct roof. मतलब मेरा कोई What you say? Illa may you will not be say you have run 1 lane, 2 lane class A, 70 or 3 lane class A, all you have run there. Illa ka jo output hai, that will give you the envelope of everything what has been done. Yeah. It will be difficult or run. People could not give whether it is 70 R which is governing or class 3. Absolute. वो पता नहीं There is a way. उसको भी एक वर्कअराउंड निकला है जिसमें you can go and trace the load case which is generating that critical position जो भी आपका जो output. But it is not guaranteed. वही होगा. Every time you get an output for that. Because how it works is you need to generate for a system which has got transverse direction as well as. So it has to integrate along the transverse direction first, then combine those results at a point for a longitudinal direction effects.
So that's why at times it is also said कि एला के it will give you less number of results, but you should always verify those numbers through your load stepping approach or something, because this is just like physical part of the structure and getting the realize complex integration. For a single line box girder, realize, but it is not that users don't use ELA here. People use ELA to method out. बड़े स्पैन होंगे से But 300 पॉइंट तो ये अगर स्टेपिंग वाला करें तो 1000 ऑपरेशन भी देगा और कैसे क्या एला करेंगे तो पता नहीं चलेगा मे बी इससे हमारा आ रहा है तो उस केस में जनरली लोग क्या यूज करते और स्पेशली व्हेन इट कम्स बनने वाले हैं, तो क्या करते हैं इसमें वो जो लोड ट्रेन जो बनती है आपको फाइल्स खोल के दिखाता हूँ. I would another, so I'm carrying two bags these days. Recently received this laptop and it contains no data. So वो मैं खोल के आपको निकाल के suppose there is a balance cantilever, okay, having spans let's say 75, 150, 75 let's say. तो वो केस में तो इन दैट केस हर एक मतलब क्लास का एक ब्लॉक बनाया जाता है कि उसको एक वेरिएबल में डाला जाता है. क्लास है फिर इतना गैप, फिर दूसरा क्लास है फिर गैप, फिर तीसरा क्लास है फिर गैप. It is physical placement as per the requirement in that case. दो रोटी बीच में गैप नहीं है इसको मतलब 3-4 हाँ मतलब कैसे वो केस में बहुत सारे क्लास है एक के पीछे एक आने वाले हैं. 4-5 कंटिन्यूअस स्पैन हो गया हमारे लिए प्लीज डिफरेंट साइड से है but then for every element and for every load effect आप जनरेट कर सकते हैं what is the vehicle location. उसमें व्हीकल लोकेशन भी आप हर बार निकाल सकते हैं. इसमें भी निकाल सकते हैं बट आई एम सेइंग नहीं अगर दोनों का कंबाइन बढ़िया तो ऑप्शन दे जाएगा. नो कमेंट्स ऑन दिस. You can generate, but yeah, I have seen cases wherein कि वो नहीं आएगा एक बार. मेरे लिए तो नहीं आया हर बार. लेकिन जो ये केस है जो गैप वाला है मेरा छोटे स्पैन में अगर मानो 4-5 स्पैन कंटिन्यूअस है तो उस केस में होगा सर फर्क पड़ेगा फर्क पड़ेगा. छोटे सब में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, so let's give our hands on that influence line. Insert a task more. Push. Task name is traffic loader. Here, where it has no inserted. That's not it. It first asks me to select an axis, and I select the axis MV. It further asks me to select the code. I select IRC. It asks me the carriageway width through this option, curbstone left and curbstone right. So I say minus 4.1. Take left is minus 4.5. I'll go for and this is plus 4.5. Keep my alignment as center, and there are two. I go to load trains and I say add load train.
Let class A, and I also select एक लेन 4.1 हो गया class A. 2.3 का तो मैंने ठीक है मूव नहीं होगा बटन में So I go to calculation. 6 degrees of 6 outputs to look for. First load distribution. I'll say that it is influence line, or I'll say multi-gutter system rigid load distribution here. नहीं options है So single gutter system, multi-gutter system, hinged load distribution, shell system. rigid load distribution से क्या होगा देखो आपने ऊपर डेक स्लैब बनाया है for the transverse distribution तो ऐसा तो there is a plate element या shell element is available Yeah. नहीं कर रहा है Sorry. So what I'm saying अगर हम ग्रिलेज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं ट्रांसफर डमी एलिमेंट्स बनाते हैं लाइव लोड आपका इन बिटवीन द थ्री लेटर्स बेस्ड ऑन द स्टिफनेस एंड द स्पेसिंग ऑफ योर डमी बीम्स डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड द स्लैब शेल एलिमेंट बनाया हुआ है तो शुरू नाम देख के हो सकता है यहाँ पे शेल बना है बट अगर वो है तो मल्टीपल गटर सिस्टम रिजिड लोड डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब है ट्रांसफर स्टिफनेस काफी ज्यादा लेके वैसे जगह आने राइट जितनी ज्यादा रिजिडिटी रहेगी उतना ज्यादा गटर से लोड का डिस्टेंस बराबर आएगा मतलब ज्यादा यूनिफॉर्म भी जाएगा लेवल हमारा This is what you are saying. yes, कम होता है हमारा मतलब स्लैब पहले आप हम रिजिड देंगे जो है तो वो तो ऐसे बराबर ज्यादा इक्वली ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा This terminology over here, I need to तो मैं इसको थोड़ा चेक करता हूँ how it really works. What should I select now? लेकिन ये जो बाकी लोग बाकी बाकी अब तो काफी लोग आ जाते हैं जो लोग यूज कर रहे हैं वो क्या यूज करते हैं जैसे मान लो ये बॉक्स की बात नहीं है अगर मान लो कि जैकी मैं ये देते तो आप सबसे यही लोग ये यूज करते हैं तो लोग क्या यूज करते हैं Say multi-gutter system with rigid load distribution use करते हैं. But you know this, here frankly I have been using it as a code. Comes with a bit of different. ट्रेडिंग में तो आपका शेल जो बनाया हुआ है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा आई अज्यूम दैट Just a second, let us just verify and get back. यहाँ शेल एलिमेंट यूज कर रहे हैं नाम रखने में बहुत टाइम रखा मतलब हाँ? अलग अलग मॉड्यूल का नाम रखने में अल्फाबेट दे दिए होंगे सबको इनिशियल्स अल्फाबेट अच्छा एबीसी से कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या बताया This theory ठीक that है try to understand that. So when lane axis does not coincide with different nodes, the values of influence lines towards perpendicular to this axis. Section of neighboring node series is trivial for plane structure.
It's extremely difficult for a program to develop human ability to generate. Take proper action in such cases by defining for the interpolation point that result from subgroup distribution. Case that it shows. Second one was, and it two is the rigid load distribution that case that we said. In the first case, INT0 and eccentrically placed loading generates directly a torsional moment. And of the shear force for the effect of the eccentric has no jump in the loading location. In the second case, INT1, the load is placed by two forces that act at the two girders. The torsional moments result only as a second of the rotation. The influence for the effect of eccentricity may input terms analyzed with Minden elements. Torsional moments result additionally from of the text line. Following the transfer, also possible to view as different interpolation grades for of the transfer okay. The interpolation. वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो मैं जो इसमें समझ what I could understand is you have got transmission longitudinal members. Once the live load is not placed on these lines, तो एक सिर्फ एक सिंगल लोड को लेकर देखना है. इस लोड को क्या करेगा, A by B रेशियो से यहाँ पे इसका रिएक्शन लगाएगा एंड दैट इज ऑल. दैट इज वन वे, दैट इज व्हिच यू गिव आई थिंक INT1 में जा रहा है. INT2 में क्या करेगा, इसके बदले यहाँ पे टॉर्शन भी आएगा, वो टॉर्शन को भी यहाँ अप्लाई करेगा. This is what I could understand. One is just simply you assume this is a simply supported beam. This is your simply supported beam. This is your applied load. This is like A by B ratio से यहाँ और यहाँ लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस लॉन्गिट्यूडनल बीम के ऊपर में एंड देन यू डू द एनालिसिस. एक डिस्टॉर्शन परफॉर्म प्लस माइनस रिएक्शन लगा दो, वो तो प्लस माइनस तो वही आ गया. ये टॉर्शन को कहीं पे लंप कर रहा है सो दैट इट इज गेटिंग इट ट्रांसफर टू द अदर स्टेज. मोटा मोटा आपके लॉन्ग हर्डल जो है वो आपके मान लीजिए 3 मीटर 4 मीटर स्पेसिंग ट्रांसफर डमी बीम्स वुड बी एट से 1 मीटर स्पेसिंग. तो लोड पहले वो डमी बीम्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिपेंडिंग ऑन द लेंथ. फिर बेस्ड ऑन द स्टिफनेस ऑफ योर डमी बीम वो आपके लेवलिंग गर्डर्स पे जाएगा. जनरली जो इन्फ्लुएंस आपका रहता है सॉफ्टवेयर करता है, अगर इस जोन में आएगा तो उसको यहाँ ट्रांसफर करेगा, इस जोन में आएगा तो वो इसमें ट्रांसफर करेगा. जनरली तो यही जनरली सारे सॉफ्टवेयर यही करेंगे. प्लेट में जब प्लेट आप मॉडल करेंगे तो इवन इन द लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स ग्रिड आल्सो अगर आप रिलेज करेंगे तो में अभी लोगों ने रिफाइन कर किया है इसको तो बात अलग है. एंड दैट इज व्हाई इफ यू by B ratio is should not be more than 2 or other fundamental stuff. यही ठीक है, इसको और एक्सप्लोर करते हैं. आपको कुछ मिलेगा तो बताना, हमें कुछ मिलेगा तो. दोनों किसमें रिएक्ट करेंगे, किसमें ज्यादा कन्वर्जेंट बताया आईएनटी बोलते हैं एबिलिटी में तो भी आएगा टॉर्सन आएगा प्लस मोमेंट आएगा. आईएनटी में केवल मोमेंट आएगा. लोड के ऊपर डिपेंड करेगा सर. जी जी आपका कितना एक्सेंट्रिक है, टॉर्शन पे क्या वैल्यू है, उससे एक बीम में वो आपका ऐड करेगा. एक सेम मेथड में एक बीम में ऐड खास फर्क नहीं आना चाहिए इसमें. आईटी में क्लैरिफिकेशन unless you are doing from search analysis. ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए. कुछ भी करेंगे मेरे ख्याल से टॉर्सन आएगा और इक्विवेलेंट टॉर्सन को अगर मैं मोमेंट में कन्वर्ट करूंगा अन्य जिगेट दोनों सेम आना चाहिए. जब हम हमारे केसेस में ये फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि हम टॉर्शन में रिलेट करते
टॉर्शनलेस जैसे ही विलेज करते हैं तो वो टॉर्शन के इफेक्ट्स तो वैसे ही doing torsionless, then there will be minor differences. आप ले लो इसमें कोई आपने ये लिया है ना that makes sense आप rigidity ले रहे हो torsional rigidity ले रहे हो तो rigid load distribution ले लो. I'm just now giving a thought to whether I should transverse influence lines, and the third said that we should go for those options. Up to it that which I never thought about, whether I should go options, that means shell ones. But I have seen people also using, in some like that. बट वही हम अभी तो ग्रिलेज बना नहीं रहे ना, तो हम शेल एलिमेंट ही बना रहे हैं शायद. सेल एलिमेंट की डिफरेंसिंग क्या है? सेल क्या है? प्लेट हो गया, सेल हो गया, Plate element. है बस उसी बेसिस पर वो कुछ फिक्स कर एलिमेंट भी है What X-ray model yes. एक्सेल इज बोर्ड X-Lab is modeled. So So transverse drawing means and that's the reason I am giving it a more thought, because it's a transfer element, okay, plays role only in the transfer, not all in the longitudinal direction. मेरा जो सेल एलिमेंट है ना, जो मुझे थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है, ये सेल एलिमेंट है, वो केवल सरफेस लोडिंग देता है, वो वर्टिकल ट्रांसवर्स लोड नहीं देता है. वो कहीं भी ऐसा करते हैं कि सेल एक एक तो ये ऐसा प्लेट तो कैसा सब होता है, सेल एलिमेंट जो एलिमेंट होता है गूगल में बोल दे नॉर्मल लोड ट्रांसफर नहीं करता है. So करते हैं I go with load groups. So I create new load group. Title. Then I got class A, plus A. यहाँ पर हम ट्रांसवर्सली मूव करा सकते हैं ना, अगर मेरा लेन वो व्हीकल विड्थ 2.3 है तो फिर अगर मेरा लेन का जो विड्थ है वो 4.1 है तो ट्रांसवर्स मूव करा सकते हैं. Yes. I go to case. सेम ही है, I keep alignment center. पोजीशन है व्हीकल्स की. And I go with class A. I can further create .70R here. Is Q and new load case wherein nothing in the other lane. So on and so forth, I can keep creating new load groups. I can say okay. Let's see. Gives me a warning. It says analysis of chord defined load areas. ANT 0, 1, 2 is applicable only. Says local behavior requires values of INT 3 or higher for wider lanes.
shell. 16 मीटर. So you increase the INT value to, it was given 3579. More the integrations along the INT values along the transverse direction, more is the accuracy of the result. This is what I mean basically. So I go back and I just verify that option from. So it basically says that you should point the transverse directions. Time, not too much of time. So what I further do is I just go and see that 100 and 200 was my base, and 101 to 112 and 201 to 212. And now I can y and I can have look at 110 my mean, 210 is 170 are my max and my mean. Maybe you found this easier stepping approach. Software है तो इसलिए इतना फेमस है बोलते You know, and here is you can go to traffic loader and we can go to text editor, and all of this point is available over here of your load trains over here is now using TRAI. If you remember, it was used, but now it is IRC. So now Sofistik has got inbuilt this trains now. तो जहाँ पे आपने स्टेपिंग वाला लाइट बोर्ड बनाया वहाँ पे भी आईआरसी व्हीकल यूज कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन वो आ रहा है चलते आ रहा है वो. And then the next one was ELA, okay, that was used for and approach, and for that the INT value, okay, so you can just correlate all these outputs. So you selected of N, VY, VZ, MT, MY, MZ. You could select either one of them, let's say MY, and further you created case one with base 100 and kept two classes in that each of the lanes. Better explanation on this, okay, for each of the values, each of the inputs, okay, I'll recommend manual. So then you will be able to understand what this residual loading means, what this YX means, eccentricity of the train, the way you were asking whether I can place it eccentrically or not. So like that. So more is the width, then you cover that particular, the distance that you are really looking for. Okay. Take 5 minutes break. Yeah. उसी में कवर हो गया नहीं वो that's the Answer? load combination. Then discuss the that it was a bit complicated with those variables. Okay, let's discuss it again. Where, for example, for maxima, I did not show small thing, and I'll code it in front of you. Then maybe that will be more clarity. Maybe मुझे लगता है ऐसा कि हम जब यूज करेंगे तब ज्यादा Substop pending pre-stress pending है. is AD. Very important, and that is how you are going to use it. Point is that so all these things are available as recorded tutorials, PDF है available. video. YouTube नहीं चलता. YouTube नहीं चलता. So there is website called Sofistik for Youth.
This is for you. You can and you see that here is, if we just scroll down a bit in courses, there is post tension concrete composite bridge. And if you are again done with this, this is axis based modeling of post tension concrete composite attendance, TED only I think. कॉल करना पड़ेगा इसमें. हाँ. If you want to connect your Excel to TED, then here is a course that connects Excel to TED. Okay, it's a free course. If you want to parameterize your structures the way I showed you example, then this was that there is a truss and that was 10 and all. Free. It's all free except one course and paid course, but you don't need to attend it even. क्या है इसमें सब. TED the course. So it's not for new users, it's for like, it's for me. मतलब हाँ मतलब वो ऐसी चीज है कि मतलब वो मैं 10 बार देखूं तो फिर भी 10 बार कुछ का नया समझता है उसमें से वो ऐसा है तो I think you can take it after maybe 4 or 5 months of time. इसमें एक और चीज है जो सोफी प्लस से हमने जो ज्योमेट्री बनाई थी तो उसकी एक टेडी फाइल जनरेट हुई होगी ज्योमेट्री की. हाँ, so let me show you that. Yeah, before all those are intense discussions on different topics. So what we do is we have a model file over here. Okay, so this is a model file that we already have. Okay, what I can do is if I want to TED out of it, so I don't need to go in to text-based input right from scratch. What I can do is I can go to home, I can go to database tools over here, and I can say export to DAT. So I click on this and it asks you that what all tasks you would want to export. So I say that I want to export my materials, I want to export my cross sections, I want to export my finite elements of PMSH A or of PMSH C. These are the, so I go with PMSH C. I want to export my action, also maximum. So okay. As a result, a TED file gets generated. TED file gets generated. As a result, a TED file gets generated, and you see that this is norm IS. So if I go to what norm is, so norm stands for design code. So is ISIRC 112 that we designed. CONC is the first material concrete that we defined. Then is STEE, the steel, the material properties. So all those properties you could simply copy here, paste it for your next projects. That is all. So this is our rectangular, those standard cross sections, rectangular that we defined. So this is a line for that input of that. So the cross section that we defined, the mid section, okay, has been defined using the coordinates in Y and Z plane. Okay. So this is vertices. If you remember, that started from 100 and went up to 111 for the rectangle above the vertices. So on and so forth. So basically, you have got entire geometry generated over here, and you can take this input, start developing your TED files. Maybe if time permits, we will develop right from scratch, slowly, one by one, material by material. Okay, let's take a break. Yeah. So let's meet at 4:10. It's 4:03.
खाने के टाइम में सीख रहे हो सर आप। ठीक है ना, बोरी वैली का एक ऑप्शन बना लेते हैं ना हम, सीखते रहे। और सिखा सकते हैं। गर्दन पकड़ सकते। हाँ। भाई खुद पता हो तो ही चेक हो सकता है, नहीं तो चेक हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बनाया है प्लेन ग्राउंड फाइनल उसमें पर टाइमिंग आधे पौने घंटे, 4:30, 4:30, पौने 5। वो कैंटिलीवर गैंट्री का क्या प्रॉब्लम है? कैंटिलीवर गैंट्री में क्या हो रहा है, क्यों आरी वाला थोड़ा वजन उस पे आएगा, फ्रिक्शन स्लैब वगैरह टाइट जैम कर लो। नीचे जियो ग्रिड है, बड़ी फुटिंग दे देंगे तो जियो ग्रिड खराब हो जाएगा, गलती से भी लोड पैनल पे आएगा तो आगे वाली पड़ जाएगी। सबको समझ में देखने को आती है। सुनाया। फिर मैंने देखा कि प्लान में जो मैंने साइलेज प्लान दिया उसमें मीडियम भी दिया, बट फायदे में तो 30 वाला है, वो इसमें 16 में कोई कर नहीं सकता। और 4 मीटर की मीडियम दी है, हमारा नैरो मीडियम है। अब मैं जब ये मीडियम जब अर्थवर्क चल रहा था तभी बोल गया इसकी फाउंडेशन पहले कर लो, सो दैट बिफोर लेइंग जीएसपी नहीं है, उन्होंने तो रोड खोल के करने की आदतें पड़ी हुई है। तो अगर दूसरी साइड कैंटिलीवर, अगर हमारी बार के पीछे कैंटिलीवर, क्या प्रॉब्लम होती है फोर्स में, क्या मुझे नहीं पता सर स्लैब तो एक हवा भी होती है ना जनरल, इसके ऊपर तो लोडिंग है नहीं होता, तो है। स्लैब के बेस पे है ना, लेकिन ओवरऑल तो स्लैब ही काउंटर करती है जो भी करती है। वो स्टेबल है कि नहीं, स्टेबल है तो स्टेबल है, अगर नहीं है तो उसका अलग हम आगे स्लैब है वो बड़ा टास्क कर दें। वो स्टेबिलिटी चाहिए उसको। भाई लॉन्गिट्यूडनली तो लंबा है, हवा जिस तरफ धक्का मारेगी उस तरफ तो लंबा है, उस तरफ मुझे डर नहीं है। टिल्टिंग रोड लटक गया इस वजह से लोग नहीं हो पाते, तो आपका आरसीसी उसी टाइम में कोई व्हीकल ने हिट किया मान को हमारा आईआरसी कोड कवर नहीं करता है। विंड लोड और नहीं, एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है। नहीं विंड लोड नहीं, मान लो कि उसी जगह कंटिन्यू लगा है, वहीं पर किसी ने हिट व्हीकल हिट करता है, क्रैश फिर हिट कर सकता है, तब जो फिर वो स्टेबल होगा ही नहीं। नहीं, उसके हिसाब से एक बार चेक करवा लेते हैं, अगर है तो है, अगर गिर रहा है तो वो बढ़ा देंगे, अगर नहीं गिर रहा है तो खड़ा है। तो पोल के ऊपर तो हिट नहीं कर रहा ना, पोल जो इस तरफ आपकी कैरेज भी है, ये आपका क्रैश वेरिएंट का बैक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा के पोल लगा दिया, पोल पे डायरेक्टली हिट नहीं कर रहा, हिट करेगा और थोड़ा सा उसका लोड एडिशनल। आई थिंक दैट वुड बी तो कभी ये सेफ नहीं हो, कभी भी सेफ नहीं, डायमीटर तो 350 का है। कैंटिलीवर सर एक तो दोनों का कॉमन फाउंडेशन करते हैं, तो साढ़े 3 लेता हूँ। ओके, इसको और इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव करके तो इसकी वर्टिकल क्लियरेंस ठीक रहेगी, इसको इधर तभी मूव कर सकते हैं, को मूव कर सकते हैं, ईयर को मतलब मीडियम थोड़ा वाइड कर सकते हैं, मीडियम हमारे पास तो जगह है ही ना, इतनी बात है जाने की नहीं है ना, नहीं ये बाहर की तरफ का नहीं है, पूरी डायरेक्शन तो मीडियम करने वाला है। हाँ, और मैं थोड़ा और मीडियम में से सकता हूँ।
ऑप्शन में तो क्लिक करना पड़ेगा। मुझे 2 मीटर में नहीं नहीं लॉन्ग मीटर में नहीं जयपुर मेट्रो में है में देखेगा। ऐसे वो जयपुर प्रोजेक्ट है ये फोटो स्टेज करना वो बनाना ही अपने आप में ही है। 4 मीटर का टेक्स्ट तो तुम ये कर सकते, तुम जाना माइनस रिएक्शन ये पोर्शन यहाँ पे मतलब ये लीवर आराम कम कर सकते, इसके साथ अगर कनेक्ट कर बनाने में तो रोहित फोटो तो नहीं बट ये जो ये पोस्टिंग ये क्या अच्छा वो पेपर आपके पास है क्या? नहीं तो ये पीएफ इधर ला सकते वहाँ पे तो उसे ला सकते ये पूरा भेजा लिए सिलेक्शन करने के लिए लिया ताकि मैं पोस्टिंग वाला आगे कर रहा हूँ। नहीं, मैंने तो दिखाया नहीं है मेरा वो भी है उसका पीडीएफ है उसका आज है मैं आपको 2 मीटर फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसमें पेपर आपको दिया था कोई दिक्कत अभी तक मैं कोई पहले वही कर देता हूँ कौन सा है जो अपने पेन से पेंसिल से जो बना टाइम लगेगा मैं भी आधे घंटे में रिलीज हो रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, तब तक मैं पोस्टिंग वाला कर रहा हूँ। ठीक है इसको पता है हाँ तो 2-3 मिनट दिया पार्क वाली साइड में ये लाइन की पार्क ना आइसोलेटेड पार्क है, इसकी पार्क की लैंड ऐसे नहीं है पेपर आ जाए पार्क की तो मैं करे जो पूरा कर दूं पर पार्क में से निकल के जब वापस जाऊंगा तो वो कॉर्नर नहीं मिलता लेंथ पार्क अलाउंड की अलाइनमेंट है कितना था 200 मीटर अलाउंड की अलाइनमेंट लंबा होता है ना तो वो टेपर मिल जाती है बट एनीवे कितना 2 मीटर है ना हाँ 2 मीटर ये 6 मीटर करीब जो मिल जाने की संभावना होगी 8.5 8.5 17 ये पिलर थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी वो 3.5 यहाँ से 10 वही तो 10.5 बच रहा है तो बच नहीं 6 मीटर मीडियम 1.5 मीटर फुटपाथ 7.5 ये तो सेवा के थ्योरेटिकल है इसलिए इनको 8 8.5 होना जरूरी है फिट होने के लिए अलाइनमेंट के हिसाब से 8.5 हमने रखा 8.5 8.5 17 ये बचता है 8.5 ये ऐसे तो थोड़ा इसको एसेंट्रिक कर दें ताकि इसका एसेंट्रिसिटी कम हो जाए कर सकते हो कि ये भी सेंट्रिक कर लो ये क्लियर टाइम नहीं इस स्पेस पे तो कुछ आप इसको यहाँ तक ला सकते हो स्पेस के इधर तो आई नहीं इससे तो क्या बढ़ने नहीं फाउंडेशन कंबाइन हो गया आपको बेनिफिट फाउंडेशन तो कमाई नहीं करना पड़ेगा कंबाइन होने में क्या है, फिर तो आएगा तो ही बेटर होगा तो यहाँ क्यों डाल दिया ये इससे कैंटिलीवर पे नहीं एक फाउंडेशन सब ऑप्शन तो एक ही होगा ये दोनों के बीच में हम छोड़ेंगे इसको पीयर और ढाई आप लेवल भी हमारा कैंटिलीवर वाई कैंटिलीवर से नीचे भी कंटिन्यू ऊपर फ्लावर पॉट होता है ना जैसा जयपुर में ऐसा है उसमें पीयर में ऐसा सॉलिड है सारा प्रोजेक्ट छोड़ के ये एक नया प्रोजेक्ट इसमें हो जाता है है तो कॉम्प्लिकेटेड है इसको सर जितना कम कर सकते हैं टाइमलाइन से बाद में फिर करोगे आप आपके पास करोगे फाइल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है इट्स वेरी टफ प्रोजेक्ट 3.7 ये मूवमेंट पूरा यहाँ से करना है यहाँ तक कांस्टेंट हाइट से आप ये जो मूवमेंट आ गया ये पूरा इस
5:30 के आसपास करें। 4:30 वाइट अप करें। 5 o'clock बैठते हैं सर आप। सभी लोग कर दें। भेज दिया, चेक कर लीजिए, कंपोजिटर भेज दिया। इस पीयर को एक मिनट। हाँ 0.75 की सेंसिटिव रहेगी, अभी 3.75 है। देखिए, और भी आपको 2 मीटर दिया हुआ है, उसको बढ़ा सकते हैं। एक मिनट इसलिए कर सकते हैं तो फुटपाथ में तो और बहुत टाइट सिचुएशन है, वो प्रॉब्लम। 20 मिनट है ना। तो सब बहुत सारी केबल है, ट्रेन है, सिल्वर लाइंस है। आपके पास 3 मीटर को 1.5 मीटर में कन्वर्ट करना, इस सबसे इस प्रोजेक्ट से वो ट्रैक जॉब वही हो जाए। फुटपाथ को छोटा, वो इससे बड़ा टास्क वो होने वाला है। हम रस्ती है बड़ी सी। सर कि आप 2 मीटर आप कह रहे हैं 2.75 पर डिलीवरी से कर लीजिए। कमेंट करना, ये कॉस्ट बढ़ेगा तो वो वेरिएशन होगा। नहीं, इसको थोड़ा ये जो डैग है ना, इसको पैदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा 11.5 मीटर का है। नहीं आएगी। अगर वो सारा वो ग्रेड वापस जाके वही 6% 7% मिल होता था ऐसे ही ले लेना। ये ही पॉइंट जो दोनों कर रहे हैं, तो ये पहले यही का था, तो यही था वाले को बता रही थी। ठीक है, आप इसको जितना इधर ला सकते हैं। ये 2 मीटर का सर उससे बेनिफिट है। आप तो बढ़वा रहे हैं, कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तुम्हारा ग्रेडियंट वो हो नहीं जाएगा फायदा ना। होगा। इससे सुपर सर्टिफिकेट कम हो जाएगी, अंदर आ जाएगी बाहर में अरे प्लेट गर्म हो जाए, सीवर से मिल जाता है, बस बढ़िया है, तो जिंदगी आसान रहेगी। चलाएंगे 20-20 मीटर तो में ये आपके। ये तो सारे 20 मीटर का स्पैन बनाओगे। डालेंगे उसी में। हाँ छोड़े ही ओपन फाउंडेशन में आएंगे ना सभी, पाइप क्यों लगाएंगे आप? पता नहीं यहाँ पे अब ओपन फाउंडेशन बहुत नीचे अगर मिलेगा रॉक तो क्या करेंगे। बहुत ही कंडीशन कहीं 40 मीटर पे भी नहीं मिल रहा है, खुला है। तो ओपन फाउंडेशन लायक मिलेगा। बस ये भी है ना कि आप वहाँ गड्ढा कितना खोल सकते हैं, थोड़ा बस किया है ना। ले इसको और छोटा खाली क्रॉस सेक्शन में डिस्कशन लगने में। So let's proceed. So the last thing that is now pending is unit 2.6, right? So the module that is used for stress checks is AQB. So let me close down everything that is there on my screen. I have got in my database load case 1 and load case 2 over here. So what I do is insert a new task.
or I'll say let me insert a new group and I say stress checks. I insert a task here and name AQB. Okay. सर आपने शेयर किया है स्क्रीन शेयर यस मेरे को याद नहीं आ रहा सर आपने पहले ज्वाइन किया था ना नहीं वो लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कुछ नहीं उसमें केजे दिखेगा तुम्हें बस अगर नहीं हुआ So to perform stress checks, the module to be okay. So I write plus prog AQB. Automatically comes head and end. For AQB is such that format for AQB is such that let's say load case is 1, and here you can give a command that STRE for stresses. So whatever load case you mention about this command STRE, STRE stands for linear stresses and plastic forces. So whatever you on है ना about this will be considered into for your stress checks. For example, my crash barrier is now load case number 1, right? If I go to WinGraph, if I go to the design results, design option is not available. Design the tree is not available over here. The reason is there are no stress check. There is no design output here yet. Okay. So if I go to SSD and right here, load case 1 STRE, E stands for elastic stresses. Here you see. Okay. I give it a run. Execute AQB, I say. AQB is executed and a task more here is added. You see this one? A load tree is added here, which is beam elements, and you can then go of the stress point, maximum tensile stress, and LC you can select Y plus Z plus from here like this. So this 1.25 MPa is the stress value at bottom of your girder because of load case 1. It is crash barrier. Clear? Here you see that it goes down here. The value reduces because it is there. You know. I want to perform stress check for my SLS cases, right? That what I need is I need to define a combination here in AQB, which will have GPC coming from CSM and superposition of your external forces done in maxima, which should be factored 1. Okay. Now what I do is I simply say COMB is COM in it out. Definition of the load combination
and I want to add all values together, so I say sum. Okay, and I say LC1 and F1 is a factor. I give 1.0 here. I give it G underscore 2 and give factor F2 as 1 comma 1. I have a maxima that I have defined over here. Okay, I have a maxima that I have defined over here in live loads. Okay, at the end, wherein I have taken wherein I have taken sum of or an envelope of all the live load cases. Okay, I'll go with those which I got from my. Um, so what I do is now is I have got load case over here. Okay, which is in the traffic loader, which is an output of my traffic loader my, and it is from 101 to 112 and 201 to 212. I need to take an envelope of these two, right? I need to take an envelope of these cases. So what I do this stress check, I just add a maximum over here. I say plus text from here, okay, straight away. The one that and I just paste it over here, Control V. I remove everything that I don't want. Okay, I don't want all these load cases. What I only am 101 to 112, right? I apply no factor to it for now over here. Okay. Base I keep currently 2500. Let it be 2500. Okay, for now. I don't in fact want now VZ as well. So I just comment it out. I just remove it from here like this. Okay. And I give it a run here. So this is basically I'm taking an envelope of load cases 101 to 212, which were my live load cases generated from my or traffic loader. And I simply say execute maximum. And as a result, in my database, I am expecting that 2529 and 2530 should be my two load cases get generated. As I scroll down, I get 2529, which is critical of either it is 109, sorry, 110, or it is 210. So it is 210K. Okay. This is due to live load. This is only because of the live load. Live. Okay. So I have just taken an envelope of the live loads. Okay. The output that I have received from the traffic loader, that is ELA. So I repeat, I got load cases generated from traffic loader oblique ELA, which are from 101 to 10112 and 201. Okay. I want to take an envelope of these load cases and combine it with my GPC further. Okay, currently I'm not considering all temperature loads and all. I'm just playing with these numbers currently at the moment. Okay, so what I do is I went to SSD. I wrote a maxima. मैक्सिमम मोमेंट जो है मेरा सेंटर पे नहीं आ रहा है, वो थोड़ा इधर आ रहा है LY4 समथिंग ऐसा कुछ डायफ्राम की स्टिफनेस के कारण से ऐसे सेट ये वाला नहीं बीच में आना चाहिए ना थोड़ा मैक्सिमम अच्छा वो यहाँ पे आ रहा है सर, ये आपका कर्व में है, तो बीच में नहीं आएगा। No, they are not saying that. They are not saying that. They are saying something different. नहीं, ये बोल रहे हैं कि मिड में आना चाहिए, जैसे कि हम सिंपली सपोर्टेड है, मैक्सिमम मिड में आता है ना, तो ये एकदम कर्वेचर में लिमिट में नहीं है।
और डायफ्राम दिया हुआ करीजन में भी है। ये लाइव लोड है ना, ठीक कर रहे हो उस पर डिपेंड है। सेल्फ वेट दिखाना एक बार। सेपरेट का तो नहीं। यस पर है वो। और कुछ भी बेयरिंग को टिक कर लो। I'll create a self-weight case. Okay. देखो Modeling में भी कुछ अभी गलत तो कुछ नहीं. Let me give a run to self-weight. हाँ एक बार देख। So what I do is create a load case plus your क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा, इसलिए अब यहाँ आपको लिख के दिया है उन्होंने, अपडेट होने से आपने। पता नहीं आपसे बात की नहीं मेरी, वो चेक करता हूँ। आप तो ऑफिस में थे, तो आप उस दिन थोड़ी आए थे। मैं इधर को मुझे मालूम है, तो ऑफिस से बात कर रहे थे आप। इंश्योरेंस वाले कुछ चल रहा है, मैंने बोला आज के लिए मिल जाएगी, लेकिन फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी यार। मैं वैसे संडे भी जा सकता हूँ, वीक में कैसे आएगी यार, तो कुछ मंगाऊँ उससे। मैं मंगाने से मालूम चल गया सबसे भेज दूंगा। So this is your self-weight case. 4 दिन बाद साइड व्यू से देखो, साइड से मैं तो लग रहा। हाँ Okay, so in that case, ठीक है। it is at बॉक्स। it is a mid span. So, yeah. हाँ हेलो ठीक है. ठीक है। हाँ So you saw that this is a new way of creating, for you it is a new way of creating case like this. I create load case 51, applied FACD 1 year and FACD. So many ways to do one thing, frankly. So you don't need to go back to Sophie Plus, define there only. Say, oh, कर दिया. Okay. I don't need this. I'll see. तो अगर मेरे को कुछ भी डिफाइन करना है, should I start from the first, मतलब फर्स्ट रो और यही नहीं है, इन बिटवीन कहीं पर मैं यूज कर सकता हूँ? यही नहीं है इसके लिए। है ना सर. ऐसे जाके बोल दो कि define ChatGPT में. हाँ सच बोल रहा हूँ. अब सिर्फ उसको बोल दो कि वो पूरा मतलब वो बना के देता है. सारा स्क्रिप्ट आ जाता है. मेरे को लोगों ने लिखा है, लेकिन मेरे को लोगों ने लिखा है कि उसको बोलने का नॉन लीनियर टेम्परेचर डेफिनेशन. आपको वो जो मैंने स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट आ गया. Nine is the envelope. Okay. If you want to add further more, you could add. And let's add one more load case. That's for temperature, let's say. Okay. Or we keep thinking it is only live load case at the moment. Okay. Now further what I do is take this live load case to my GPC. So I want to combine them together. Okay. AQB is a module which stress checks. If you want to evaluate stresses, you should use module name AQB. I don't know from where this AQB comes, the way it is advanced AC for AQB, I don't know. STRE is the command, okay. Linear stresses and plastic forces. And if you select this E, it should give you elastic stress values. Okay. So this is you write above this. Okay. Anything that you write above this, any lowercase. Let's say I write LC1. Okay. And if I give this a run, so it would create a tree like this design, beam elements, stress of the stress point, maximum tensile stress, and at point
bottom point y plus z plus, you get 1.25 tensile stress value. Okay. So I have just selected this. So I'll just get out of it. I go to select boxes and structural limits. So I'm here. What I further do is, let's say that I go here and I say lowercase 1 comma 2. Okay. As well. Then I simply go and say execute AQB. So whatever the bending moments you have for that, okay, so whatever for load case 1 as well as load case 2, you got the stress value. Now you want to perform stress check for your SLS combination. Okay. SLS combination will have GPC coming from your construction stages as well as will have, for us, it is only the live load case now. Okay. We have already created pre-superposition for this and it in load case now and while max of this. What we now do is, I'll just comment out this LC1 comma. I will call in G1, G2, G3, P and C from my construction stages. I could also call them as load case number 5010, 5090, 5095. But if I start calling like this, the load case wise, it is, for example, I have got a balanced cantilever bridge. Several activation of your segments and maybe your 100 and 200 load cases might be there, which that is G underscore 1 in our case. So I just go here and I just copy that input SLS combination from here. So what I do is select this combination and just instead of writing this line, I'll just copy it from there. Okay. So same syntax. So it is combination. We are sum. Okay. Load case 1 is all load cases coming under G underscore 1. Factor is 1. 2 is all load cases coming under G underscore 2. Our SIDLs basically factor is 1. Stresses 5 is L underscore 13. So what I can do now is, okay, I cannot use a number here. I can only use, such strings over here at the moment. So what I can now do is I have called such LC of this 2529 as type L underscore 1 and CST as a very large number, let's say 999, that is my last construction stage. And rep part, even if you don't mention it, that's not a problem. And SUP, I'll say that you don't mention this as well. So just mention these things. So basically what you are now doing is you have already stored 2529, wherein you have taken envelope or superposition of combination of at 2529 you are calling over here for 1 and combination, okay, wherein you are going for G underscore 1 and also L underscore 1 you are calling over here. Not clear? This combination, what you need is just live load cases, whatever your envelope is and all that, right? So I created an envelope outside and I have now brought that envelope to this place. Given it a type L underscore 1, I am adding over here directly. L underscore 1 में 25 29 किया. Yes. तो ये तो सिर्फ picture वाले हैं. Yes.
Yes, it's only flexion. एक्चुअल लोड आएगा No, it's why it is. वही है तो सिर्फ एम वाई है And why? शेयर के लिए मुझे अपना 29-30 करना पड़ेगा 25-30 करना Separate. Now, why you need to perform this comp here is a question. Because automatically changing section of your girder in your custom. Perform this combination in maxima as well. Okay, you could do that. Section would have been not considered over there in maxima. Takes into account while stress calculation over. So this is not the complete definition. Okay, this is the here is you need to tell that G_1 it has to take from this particular file hash include सेक्शन है ये क्रॉस सेक्शन है वो तो आपने डेप्थ के लिए लिया था ना उसमें जो डिफाइन किया था आपने स्टेज में आपका जो वहां पर आ रहा था जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया जो है फाइनल स्टेज में कुछ और आ रहा था इनिशियल में कुछ और आ रहा था सही है राउटिंग की बात में तो उसको ये कंसीडर नहीं करेगा इसको मतलब जो फाइनल एसएलएस में आएंगे तो जो है अपने आप नहीं लेगा वो अपने आप नहीं लगा सर वो कंस्ट्रक्शन स्टेजेस का एंड स्टेज तक था लेकिन वो एसएलएस कॉम्बिनेशन नहीं था अच्छा तो एसएलएस में लाने के लिए जो है उसे कहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उसे एसएलएस कॉम्बिनेशन में मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ हियर आई एम सेइंग दैट it is my combination which is SLS combination wherein I say that I sum up G_1 that is all my self weights G_2 all my SIDLs P all my pre-stress cases from my construction stages shrinkage stages from my construction stages and L_1 which is envelope of my external loads combination of the external loads the factor 1 ये तो उसका वो कहाँ मतलब एंटर हुआ इसके अंदर कि अब क्रॉस सेक्शन मेरा जो है फुल आएगा इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ वो कौन सी बाउंड्री है कि यहाँ तक तो जो है कि ये ले रहा है आपका जो है कि वाइडेड एरिया ले रहा है यहाँ पर ये आपका पूरा ये जो मेरा जो कॉम्बिनेशन है सर इसके लिए मेरे को पूरा क्रॉस सेक्शन ये केस में यहाँ पे तो ये मैं यहाँ पे जो लिख 9 एंड यहाँ पे भी मैं बहुत बड़ा कुछ नंबर देता हूँ मैं यहाँ पे भी 999 लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन स्टेज ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब लास्ट वाला क्रॉस सेक्शन जो रहेगा वो क्रॉस सेक्शन लेके मेरा ये पॉइंट में है कि ये लास्ट वाला स्टेज का आएगा लास्ट वाला अगर मान लो कि मुझे जो है कि वो वाला लेना था जैसे कि कई बार ये भी बता रहे थे कि कई बार ग्राउटिंग वाटिंग नहीं करे बिना ग्राउटिंग के भी अगर मान लो जो है कि हमें उसको जो है कि आपको डिजाइन करना पड़े तो उसमें क्या लेना पड़ेगा उसमें ट्रिपल लाइन की जगह इनिशियल वाला क्या अच्छा तो आप 11 दे दें इसको 11 केस भी देंगे तो वो अनग्राउंडेड वाला स्टेज तो पुराना वाला प्रोसेस ले लेंगे तो वो उस 11 के हिसाब से अपने को स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट ये जो भी आपके क्यू टाइप के लोड्स हैं वो ऑफ द कंस्ट्रक्शन पे जो क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज है उस पे नहीं लगेगा बट ऐसा यू हैव टू राइट दिस सीएसटी 999 हाँ तभी वो 999 stands for कि it's a standard now कि मतलब मतलब कुछ नहीं लिखते तो क्या होता कौन सा प्रॉपर्टी लेंगे हाथ सेट होने में टाइम लगने वाला है एकदम ऐसा वो तो ऐसे कहती है लर्निंग कर्व इज एफर्ट ज्यादा लगेगा इसमें अगर इसमें अच्छा होना है सर डिफॉल्ट वैल्यू star default value that means it will tell you to give that input ट्रिपल लाइन की जगह कुछ और भी दे सकते हैं जो 500 400 बड़ा नंबर तो जो आपका लास्ट का जो कंस्ट्रक्शन
नंबर कहीं और रिपीट नहीं होना चाहिए किसी और चीज के लिए, ऐसा तो नहीं है ना, जैसे कि नंबर किसी और के ये तो स्टेज का नंबर, स्टेज का नंबर है। और मैं जो भी मेरा रिजल्ट यहाँ पे सेव कर रहा हूँ 9023 लोड केस में सेव कर रहा हूँ। स्टार्ट विथ 9001। So this information G_1, G_2, okay, this doesn't come, information is coming from file which I am including over here, which is hash include name of the project underscore csmlf.dat. If you go to text editor, then okay, so my construction stages are not executed currently. So let me execute my construction stages first. Model file. Right click and I say calculate construction stages. Then I'll have that C and let us have look G_1 underscore 3 contents. I also need to then run traffic loader because I am using it in my that particular module. Maxima, which is envelope of my live load cases. Then I go for this stress check using HUB. Okay. Define this variable anywhere. Type R cannot be used in combination. So there is, I also have this type R. It's not there anywhere. I am not. तो इसमें एनवेलप केस कैसे लेगा? एनवेलप तो ऊपर से है ना, LC1 से, सॉरी L1 से। अच्छा L1, ठीक है, L1 है ना। L1 I have brought over here. This 2529 I brought here. I gave it a type L_1. It is like a container. Add and I say add P. Okay. Temperature load case का number क्या था मेरा? 56 it was, right? I go back here. I 6 and तो सम envelope करके दोनों को sum करेगा वो. Yes, I also need to run this task first to be able to have those results in my database. And then I go to stress check. Then I go for this envelope. Right. Now that contains your superposed results of your external load cases, which are not part of your construction stages. As a result, let us see what output it shows. Okay. So I give run to this. See that it says beam, all elements are selected, all beam elements have been selected for that stress check. Considered load cases are 529. Sorry, 2529. Something that is coming from your maxima. It's 5010, 501. It is considering all of them. And these are the stress values that now, what you should understand over here is that
in stress checks, okay, from where is this? What that file is, if you go to home, go to text editor, open text file, then you go to this CSMLF file, right? And you see that here 5010 has got type G_1, so on and so forth, as that you mentioned in your construction stages. You see that when you mention G_1, that is file 100. So once you mention G_1, account all these load cases. In construction stages, it would have listed out those activation stages over here and would have taken for our SLS combination directly without mentioning each of these stage number every single time. And G_3 is mentioned over here. So the title for this file is it was CSM checks. We included this file, include hash project underscore csmlf.dat. So that file, that means those load cases were brought into taken as here as G_1, G_2. Yeah. One thing that I have not shown you is, for example, if I'm taking a maxima over here, okay, I'm taking envelope of my live load cases, envelope of temperature load cases, and doing the sum of these two. Okay. Now, let's say that I want to understand for a given, I got some result, and from what are the factors being applied and which are the load cases associated with that in that particular maximum. Press your results. So in that case, what you can do is maxima C 2529 E type speed and X is 0 in that case here and element 2. So let's say that I just go here and select any random element over here. One, let's say. Give it a run. Considering my load case number 2 and load case number 5. With these factors, as a result, I am getting that 2955 maxima. Fine. Maxima means absolute maxima. So maxima is the Positive. so it can give you both maximum positive, Maximum. as you ask for. Yeah, absolutely. So what I can now do is I can just show you the automation. So now you understood the concepts, right? How maxima works, how AQB works, and all. So what I have done is, okay, I did it. It is all ready-made file, just the way we had a ready file loads. Okay, let me take this one. Hello. So here what I have is I have got maxima for ULS basic combination live load data. I have mentioned over here combination rule number 210. EXTR is EXPL and base is 2100. Type is none and title is ULS basic live load DD. For all the actions, irrespective of whether it is defined in my load cases or it is not defined. Such add
works as per IRC 6. The actions is not there here, okay, then it will be simply ignored. Suppose, for example, W stands for wind load. Wind load is not modeled. It will be ignored. And I get an output for my all 12 outputs over here, which will be for my ULS basic combination. In this, the program will also understand that it is a live load and I should go for an envelope first, then further submission with another envelope. That it understands because initially I have a provision over here wherein I have defined action types. So whether this action, so these are the values permanent. So if it is a dead load, it is permanent. G underscore 2 is permanent. P is permanent. But when it comes to Q, it is conditional, so on and so forth. If it is EX, that is, it is mutually exclusive within the category. So run these actions, okay? This file. So this file that I shared with you, you simply need to paste it and define action types which have been predefined. Okay. In that case, it will automatically for you take ULS basic combination with live load. Next is ULS basic with wind leading, accidental live load leading, then is ULS seismic live load leading, so on and so forth, all ULS combinations. Superposition is done. Then in further, there is an AQB, okay, which calls in so on and so forth of all those maximas which have been defined above and performs here and goes for ultimate design. They see ulti, that is, it will go for flexural check as well as it will go for a shear check as per European standard. Shear check is as per European standard. Shear check कर रहे हैं all means yeah ULS check कर रहे हैं. If you say Europol, तो cylindrical versus वो कैसे किया उसने? That has been informed. So I'm saying that shear check it goes as per EC and for flexure it does as per IRC1. We have already defined material. Material यहाँ से pick करेगा. Material starting to pick. So what I want to convey here is today, okay, in this last 5 minutes is when it comes to combinations, you already have the steady files ready, wherein the user has to only take care of one thing, that is, user should model the load case appropriately in appropriate action. Seismic load case, you should appropriately model it in each type should be given as wind. It will perform those combinations for you on its own and also the ULS design. And also there is similar for SLS combinations, all pre-superposition maximas and AQBs. Stress checks like this here. So earlier when I used to face, I used to explain them the concept, but this was not ready with me. But from their demand, I realized that, oh, I should just create this. And these automatic load combinations are available in Midas as well. And automatic load combinations are available in Sofistik as per IRC. That's why I just went on to create this. This comes from IRC 6. And if you open that table, it is exactly the same. And yeah, this is the standard foil. So all that user needs to do is you need to go to Sophie load, select appropriate load case and put it in the appropriate action. That is all.
You don't need to define those actions and the maximum and those superpositions for ULS and SLS on your own. So it will automatically take all those things. अच्छा विंडो तकनीक कैसे अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक लेगा या एज पर आईआरसी 1 2 इसमें कैसे कुछ So wind is you will have to calculate the UDL values wind pressure and वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा. वो अपना नहीं देगा नहीं देगा 6 नहीं लेगा नहीं देगा. और वो असेसमेंट सेस्मिक आपको वो भी कैलकुलेट करके आपको लगाना पड़ेगा. गैस के इक्विवेलेंट ये इसमें कम ज्यादा करना पड़ेगा इसमें तो उसमें तो लिमिटेड स्टेप्स हैं उसमें क्या ग्रास के अंदर उसमें लिमिटेड स्टेप्स है मतलब सेस्मिक के लिए विंड के लिए मेरा इंकॉर्पोरेटेड है उसमें आईटी और आईटी 1 2 जो सेस्मिक के लिए और विंड के लिए इंकॉर्पोरेटेड है ना विंड के लिए तो नहीं है, विंड के लिए तो आपको खुद से पॉइंट लोड्स या एलिमेंट लोड्स लगाने पड़ेंगे, बट सिस्मिक क्या सिस्मिक का मतलब वही है रिस्पांस स्पेक्ट्रम. रिस्पांस स्पेक्ट्रम सिस्मिक भी बता दूंगा. So this was my concluding remark. Understood the combinations, but combinations are readily available. You need to model your load cases in appropriate actions. Combinations will be automatically done. This is the idea. So the explanation was fixed. This AQB is exactly the same that we prepared. So here you see that hash include project name underscore CSMLF file is brought in. Beam CS auto, that means automatic from the construction stages. So I'm beams with automatic cross section operations. LC is coming from these maximas which are there above SLS rare, SLS thermal wind and all. I am storing it in these containers L underscore 61 to L underscore 74. I'm then going for combination wherein I'm calling G underscore 1, 2, 3, PC, L underscore 60. I'm taking from here and saying that this is my SLS and it is my SLS rare combination with live load leading for MY max. And I'm storing it in load case number 9129. Generated जो भी रिजल्ट रहेगा आपको 9129 में मिलेगा. Fine. Pendant definition first. So we saw how the tendons were defined using graphical user interface, that is Sophie Plus. Okay, we saw this. Okay. This with the text input that we already have. So here what we did is first we defined the geometry. Along the station points, we defined U and V coordinates with respect to the axis. U was in the horizontal plane and V in the vertical plane. Using 5 station points, we could define the entire geometry of the duct. What we did is, next tab was of edit tendons, wherein we find our stressing stage and the grouting stage and additional information related to what are pre-stressing limits, then the pre-stress direction and pre-stressing sequence. Now, let's see how this same input can be defined using TEDdy. Okay, that is our now goal. So what I do is I just open a new, okay, for my tendons. Let me see. Tendons are not here. Okay. Or what I can do is, a better way can be, I can go back here to database tools and I say export to .dat
tracing and get this file out. Back to SSD. I say attendance. Put a task over here for attendance definition, text editor, and here is attendance. Set this and I say plus prog attendance, and is my head and end. As I write, what I do further is I just go and I need to define an axis along the, so I want to create an axis based on the start and the last point. Say axis, so it is reference axis. NOH is ID of the reference axis. PA value according to its type, and the type is node. Okay, so maybe I could just write this type over here to be there in the sequence. Type is node, and value is node number is 1 to 2. Okay, and title is tendon axis 1. So what I do is, let's say that I want to create tendon from this point to this point over this axis. So what I do, or what I do is I go to point and I give it some number, let's say 7. Okay, so this point is 7 number, and further my is 8 number. You saw that it was 8 number, right? I export it. Now I say that my first point is 7 and VAL 2. So it is from node 7 to node 8. Good run. Just give it a run. Generated in my report. Structural error होगा. Okay. So this after the export. Okay. But I don't know what node number it is. 3 point. That's why I did that. What I do is, this is my tendon axis, right? And tendon axis 1 is the name that I have assigned, right? So is my tendon axis, you see this?
And here also my tendon axis is generated now, and that's starts from station 0 and goes up to station 23.2. So this was axis generation without going into Sofit Plus. Even if you have got many number of girders, let's say 20, 24 in your model file, then you have only those points modeled already, and you need to simply run a loop start to end for each of the girders. Now what I next do is, here in this case I have defined this axis 1 to 24 using node numbers like this. So what I do is I need to define, okay. So for definition of pre-stressing system, what I do is I have got a command which says SYSP, which is pre-stressing systems. Then it says NOPS. Okay, NOPS is ID of the pre-stressing system. Input for NOPS, I'm taking it from here. Okay, the first NOPS is 1001, and for applying a loop 19 times. Okay, so basically I'll be generating 19 pre-stressing systems from 1001 to 1019. This is the idea, with number of strands getting increased in each of the pre-stressing system 1, 2, 3, 4, like that. I'm doing here. Okay. So further, what I have is AP is 140 into hash n plus 1. N has got values starting from 0 to 18. Okay. So in the first loop, n will be 1. So here will be 140 into 1 will be the AP value, your area of your that F, then the tendon, and then in the next loop 140 into 2, 140 into 3, 4, like that up to 19. So when it comes to your PSF value, that will be area into 1862 into 0.9 into 0.87. Now in this input here, 52 in our case, the material number is 5, right? 4, 5. Pre-stressing material number. Can you please check? 5, 2, 3. 5 it is. So MAT stands for the material number of the pre-stressing system. ZV is the reference calculated here above, the PSF value. Okay. इसमें value भी डाल I mean in place of variable value. Enter 3880. Okay. So ब्रैकेट में मैं उसको ये भी डालूंगा, किलोमीटर मेरा यूनिट वो है. Is AP, which is also then MINR. MINR is minimum permissible curvature radius, that yesterday we were having look at was 8.67407. Beta is wobble coefficient. So this comes from 0.002 divided by friction coefficient into 180 by. That is 0.17. Mu negative is, that is 0.17. ECC is minimum sensitivity of tendon inside the duct. I am keeping it 0. SP is slip at the jacking anchor, that is 6 mm. SC is Flip at the other end. I don't know what SCBP. See this value 0, and maybe this is my old inputs. I'll just I have not written anything out here. Outer dia and inner dia and the title is here. Okay. So see what is the output of this loop, that says that there is a warning, and it says that
item COMP at SYSP is obsolete input. So, previously there was such an input, but what I can do is I can select it as a column block like this and just delete these two inputs. So these are no more. So in this latest version, and let's see what is the output. And also it says that DI is also an absolute input. Please note that future is sophistic. Okay, but I remain with it. And what I do is I go back, or here also you can see onto the left hand side, it has generated pre-stressing systems 1001 to 1019. If I go, it shows me pre-stressing system 1001, wherein the reference force is 204. The reference trace is 1457.95, which is, as per our code, and area of each 10 140. Next is the pre-stressing system with 280 square. Next is three times 280 into 3, something like that. Okay, for 19 times the new pre-stressing system. Next is pre-stressing system is defined. Next is what we need to do is we define the geometry of our cable. Okay. So I go with this define cable. So this is something called as block. So I'm defining a block for cable. Okay. So the name is cable. It has got inputs. Okay, which we were doing the same inputs using our pre-stressing editor using graphical user interface. So inside this, I have defined everything using the variables. Okay. Now I say that station. Now I say that station at start, and I give it a variable name TENS. Q value is x1, V value is TD. So the variables. Now what I can do is I can further say that cable definition for girder 1 or first cable definition or something we can just mention. What I do is I just pick up my numbers from here. So I defined several cables in single go, which will not be appropriate. So I'm here, just giving a loop and running all 20 cable profiles in, one single loop. So only 3 cable profiles, but running different loop. Here I have used hash include cable 1, but I want to go hash include only cable, not cable 1. This is cable 2. So I hash include cable 1. This is cable 1. So I'll go with this cable 1 only. So I just take this define cable 1 block. Okay. C and 1, or I say that for this I just simply let hash length of my girder. Okay. And so TNS is the starting point. Let hash, the last one, last station point. So
22.7960. Let me just confirm how it is taking over here. नॉर्मली जो जैसे आप वर्ड डिफाइन करते हैं बहुत वो रिकग्नाइजेबल होते हैं, मतलब कि पढ़ के समझ आता है कि क्या पॉइंट कर रहे हैं। जैसे स्टेशन है तो स्टेशन ही नाम देते हैं, आपने टीएन दिया बस Start. So, tendon start. अच्छा Tendon end. ओके So that's it. Yeah. So tendon start and tendon end. And for सर्कल की लेंथ नहीं देखी क्या? span length होगा ना हाँ, सर? स्पैन है, Span length होगा. बट पहले हमें स्पैन के डिफाइन करना पड़ेगा, स्पैन क्या है? Span क्या है वो depend. So those will be our parametric inputs. जैसे ऊपर जो template आता है ना, तो span length. बट यहाँ तो स्पैन चलो जो भी है, हमारी गणना सेपरेट डिफरेंट हो रही है। जीडी दिया, जीडी आप जीडी करके दिया तो स्पैन तो कोई सिर्फ एक वैल्यू होगा और ऑल थ्री वैल्यू। Cable 1, cable 2 and cable. So what it does is, how it works is, so if you give it a span length, okay, so you have got tendon start value, let's say 0.15. So you need to that let tendon start is 0.15. C1, so you need to give it basically two values, tendon start and tendon end. 0.1 from tendon end is span minus the tendon 0.15. What it does is, it goes and calculates for you C1. C1 is tendon start plus tendon end divided by 2, which is your center, and this is that station point. वो हमें नहीं डिफाइन May depend on your that C1 will be a variable that will be getting generated as a result of definition of T span only. Is this variable which is of your cable straight length divided by 2. So your input now here is only span length and the recess, that is 0.15. Based on this, it is also calculating this SMA C1 station point, also this SNE and TNE. इतनी क्या कर रहा है ना कि स्टेट पोर्शन है और जो मिड पोर्शन है उसमें सारा चार्ट बना देगा ये, जबकि हमारा जो मामूली एसएलए से टर्न्स तक कर बना। हाँ हाँ वही तसले तो स्टार्टिंग में होगा और सेंटर बीच में होगा। नब्बे हमारा क्या होता है कि एंड स्टार्टिंग में स्टेट होगा, फिर हमारा मिड में स्टेट होगा, एंड में थोड़ा पोर्शन कार्ड में होता है हमारा जो है बीच में, जहाँ जहाँ पर दोनों जो है कि मीट करते हैं एक दूसरे का पोर्शन होता है। स्ट्रेट किया था इसको, हमने क्या किया था कि we wanted it to be straight over here, तो हमने इसके ऊपर हमने स्ट्रेट इन पॉजिटिव 1 मीटर क्या कर दिया। यहाँ पे जब आया था तब अगर मैंने ये जो वैल्यू जो 0 है ये अगर मैंने डाला ही नहीं तो ये मेरा ऐसा कर्वेचर में दिख रहा था, तो मैंने उसको एडिशनल लगा दिया कि मैंने इसको जो वर्टिकल इंक्लिनेशन है इसका
कनेक्ट होगा। यहाँ उसमें आप टेडी प्रोग्राम जो बना है उसमें कैसे कौन सा इनपुट है? अच्छा, टेडी में भी सर DU ये इसका इनपुट है ना, सो टेडी में अगर गए and DVS. DVS is 000, that is vertical. So idea is what you do is you define your, and these variables should be able to calculate all those things. And you say that for this cable your span length is this, and say hash include that cable. So it should generate that cable profile. Next will be also similar. Hash include, you update your the span value, the recess value, and say hash include cable. That should update your cable profile for that next girder. So I'm just trying to show it to you over here. Okay, so maybe if I start to do it, it will be too much. So for example, over here, you see that the first input is, so this is station with 4-span continuous module. Okay, it is spine and wing. So this is for a box girder or spine. So it has got axis 61, 62, 63, 64, 65. And this is for concourse beam. Okay, fine. And okay, this is 5 spans. I don't know. So I don't remember exactly what the configuration was. But axis A61, maybe axis was created in that case. Here also, here is cable 1 defined. Okay, that has got these station points and U and V coordinates. Okay, what it says is TGEO, NOG is the number of girder, okay, and here is NSTR value. So based on NSTR input for that cable, consider how many number of strands from 1 to 19. Now, how it works is, let me show you over here. If I go down, cable 1 definition. So here is cable 2 included, let's say. Cable 2 is also similar, no change. So this is cable 2, you see that. So similar definition, no change. So what happens is that for cable, say that NSTR is 12. The moment you say NSTR is 12, it stores that value 12. Okay. Tendon start is 0.15. You say that tendon end is span length minus 0.15. You say that TD is coordinate that we were having a look at is 1.6. PD is 925. PD1 is 0.8. And XD1, XD2, XD3 is in transverse direction, the horizontal planes. Okay. And SL1, SL2, SL3 are the straight lines. Now, when you say hash include cable 2, okay, these variables have got already that input, and this input will be fed to these variables over here. So that input, the TENS and all will be given, and the say to hash include cable 2. Suppose this was done. Now you go to cable number 2. Almost the similar input. If at all you want to change your XD1, XD, and again simply write hash include cable 2. Further you go to cable 3 and you again just update, let's say from 12 to 10 tendons and all. If there is something that is going to remain unchanged, you don't need to write it over here and say hash include cable 2. हैश इंक्लूड केबल 2 से क्या हो रहा है? ये जो मैंने वेरिएबल्स यूज करके ये जो ब्लॉक जो डिफाइन किया था, इसमें नंबर्स नहीं मेरे. So if you write include cable 2, it will paste below it line number 196 to line number 218. So this contains some variables, TENS, for example. So that TENS variable will be, so here I am writing that entire block. So that TENS which is defined here will be fed to it. Yeah, so you don't need to. Cable geometry का parameter actually fixed in cable. Yeah, exactly. Absolutely.
And for every next cable, you just change those values which you change. सीएफ में लूप वगैरह लगा सकते हैं. हाँ देखो ना, अभी मेरे यहाँ पे 24 girders थे at a time. What I did is, so here I have used cable 1, okay, block है ये मेरा cable 1 का. So cable 1 जो है मेरा, ये मेरा cable 1 है. So this is my cable. What I have now done is, for cable, I have said that number of strands for girders from 0 to 12 girders is 12, and number of strands, this NSTR value, from girder number 22 to 23 is 8. Basically, it is 13 to 24 basically. As a result, straight length for first 12 girders is 10, straight length for next 12 girders is 5. I'm further saying that number of cable, saying, okay, TD and BD values 1.5 is 0.3 and BD is 1.5 minus 1.25. So it is at the mid span now. So earlier it was, at the start, it is now at the mid. NOT is number of my tendon is 29. XD1 value minus 2.35 minus 0.235 and onto the right will be plus 0.235. And I'm just saying that apply a loop, okay, for that. And here I'm saying that after all that hash include cable 1. So this input from line number 2172 to 2197 will be able to generate cable profiles for all my 24 girders. So this also is information related to construction stages. In which construction stage you need to activate it. Here it says ICS1, construction stage of grouting. So every single information that we used to fit in the graphical user interface is here. It also has PFAC, which stands for pre-stressing limits with the factors. If you remember, we selected as per European standard in that Sophie Plus, that option. And finally, we had an option to, so idea of the tendon, number of the duct joint tendon. If you want to leave any recess, okay, you can leave any recess. For example, here I am saying from TENS, that is 0.15 meters, and up to span minus 0.15 meters, the recess. And TNEN, so where TNEN is number of summarized tendons, and LC naught, that is the load case for that. TR value, so here is TGEO is 3, and while defining the duct geometry, idea of the mention NOH, you mention about which reference axis you want to have that duct geometry, and NOPS is idea of the pre-stressing system. Suppose your NSTR value in definitions below is, let's say, 12. Okay, let's yeah, it is NSTR is here, right? So it is, if you put NSTR value 12 over here, and then you say that hash include cable 1, what it does is it includes this entire block over there, hash include cable 1, this block. At that time, your NSTR value is 12. That means your NOPS is your number of pre-stressing system, idea of the pre-stressing system. It would take 1000 plus 12, that is 1012 numbered pre-stressing system,
And if you go to your this report, 1012 is something with area of each tendon. It is 140 into 12. 12 strands, but it takes pre-stressing system with number 112, and appropriately it has all its definitions as per. एक बार मतलब करने के बाद ही मतलब you will get a feel, and that too you don't need to start with any file or something. What you need to do is define it using Sophie Plus, export it, and start looking at it. Yeah, let me show you this. ये जो इसमें लूप लगा रहे हैं आप जो है, मेरे ख्याल से वो तभी होगा कि जब आप कोई शिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ और वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे हैं इसमें, रेडियस वगैरह चेंज नहीं हो रहा या कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बस आपको क्या हो रहा है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, दूसरी से तीसरी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं. इसमें वेरिएबल कितने लगाना हमारा ये लूप में क्या हो रहा है कि हमने सर्टेन वेरिएबल्स हमारे हैं, हमारा रेडियस हो गया, हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारे फिक्स है कि ये भी वेरी कर रहा है लूप के अंदर हम ये फिक्स है ना, तो लूप में पोजीशन चेंज कर रहे हैं आप, उस पोजीशन चेंज होने से आपने जो है कितने सेलेक्ट किया, वैसे पोजीशन चेंज, बाकी चेंज. अगर आपको वैसे वैल्यू भी करना है इसमें कि आपका हर सेगमेंट के लिए आपका जो केबल बॉडी वैसे भी करना है तो वैसे भी आप कर सकते हैं. नहीं लूप का नहीं लूप वैसे कर दो, लूप से भी कर सकते हैं. लूप जैसा आपने किया है, हाँ, लूप से ही कर सकते हैं उसको. कर सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं कि देखो आपका जो डेप्थ है आपके हर सेगमेंट का, create an array, let's say array named A or depth of the girder. जिसमें stored all the depths along the length. Let's say it starts with 3 meters and goes up to 6 meters, 3 point and so forth. फिर आपका जो केबल कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे उसका भी आपका जो टीडी का जो वैल्यू है वो भी उसके हिसाब से जाना पड़ेगा, राइट? TD minus 150, TD minus 150. Exactly. Absolutely. Absolutely. वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उसके अंदर जो है, हाँ. उस लूप के साथ में वही वेरी करेगा. So tomorrow when I come, I'll show you nice files like for balance cantilevers and all, and उसमें ये सारी चीजें की हुई है, and they are not used Sophie Plus at all to generate balance cantilevers entire cable. It is very efficient to handle जिसके वो जिसने बनाया उसके लिए. सही अभी आपने मेरे ख्याल से उसका दिखाया था मेट्रो का, प्लेटफॉर्म पर जो दिखाया था वो मेट्रो का ना, मुंबई मेट्रो का कि कहाँ का है? ये लाइन 2 की था, स्टेशन है ये स्पेक्ट्रम कर रहा था ना, नहीं स्पेक्ट्रम नहीं कर रहा था, स्पेक्ट्रम कर रहा था ये अब मैं कैच नहीं कर रहा था क्या, बहुत इश्यूज आते हैं इसके अंदर जो है, लाइन 2 के अंदर ही जो है, लाइन 2 में था जो है, अच्छा इश्यू चल रहे बहुत इश्यूज काफी मुश्किल से हटे हैं कि यहाँ पर जो इसमें कंजेशन बहुत ज्यादा था इसमें, आप कंजेशन इसमें दिखता है, reinforcement condition की बात कर रहे हैं, it was very bad. कंक्रीट नहीं जा रहा, कंक्रीट नहीं जाता क्या इसमें आपका और वो स्पाइन है वो मैंने डिजाइन किया. तो नाम दूसरे स्पेक्ट्रम है या अभी का डिजाइन है क्या वो? नहीं मेजर स्पेक्ट्रम हम तो अभी चालू है. हाँ तो आप कौन सी ये स्पेक्ट्रम उसमें क्या है कि वो डेप्थ अलाउ ही नहीं करेगा ज्यादा डेप्थ लेने के लिए. थोड़ा पहले मतलब 20 के बाद 60-80 की स्पेसिंग दे देगी, अब 32 के बाद 200 की स्पेसिंग दे सकते हो ना, तो ऐसा क्यों मतलब जाएगी, अभी सब चेंज रखा है, बाद में डायमीटर बढ़ा करके स्पेसिंग सब क्यों बढ़ाएगी? आप ज्यादा कम डायमीटर बार दे करके सबकी स्पेसिंग तो बहुत पावर देते हैं, इसमें कोई इंजीनियरिंग भी नहीं है, तो इसमें पावर देती है डायमीटर समय कम करें, तो आप इसमें आप इतने महान मुझे लग रहा है, आप ऐसा कैसे करते हैं? मेरे बॉस का भी तो मेरे को सुनना चाहिए ना वो टाइम पे. अच्छा केवल से थोड़ी करना है. पार्थ सर ने भी तो सुनना चाहिए. पार्थ जी तो क्यों नहीं सुनेंगे, ये तो कोई ऑफिसर चेंज हुआ ना, वो तुम्हारे बॉस का हां वो बेटर में तो होता वो टाइम पे ना ये दिस हैड लॉट ऑफ डिस्कशन कि मतलब नहीं स्पेक्ट्रम वाज नॉट विलिंग टू गो विद दैट. तो कुछ भी करके इट वाज नॉट अलाउड टू चेंज द कंक्रीट डायमेंशन एट ऑल फ्रॉम दैट योर डेप्थ एंड ऑल. उसका वो मेरे थिकनेस भी सिर्फ 1100-1200 वगैरह ऐसा है. एंड फॉर मी
क्या है स्ट्रक्चर क्या है सर स्टेशन है, स्टेशन में एक्चुअली शायद जो कमिश्नर था ना उसको अचानक से कुछ हुआ था, ज्ञान मिलता है ना अचानक से, फिर पता कि स्पाइन विंग करेंगे, तो वहां से स्टार्ट हुआ। मुंबई लाइन फोर पे पहले चला था काफी। क्या है कि आपको सुपर डेप्थ कम मिलती है, ठीक है, तो बॉक्स आप बनाओगे तो अंदर जाने की जगह तो होनी चाहिए। कितना डेप्थ होगा? 1.1 बॉक्स का स्पाइन, स्पाइन का बहुत कम, बॉक्स बन ही नहीं सकता, थोड़ा ज्यादा होगा, बॉक्स की नवीन बैठ कैंटे फोड़ो तो मुझे 2 मीटर का आदमी घुसना तो चाहिए, 1.5 मीटर ड्राइंग चेक है उसके, वो मतलब 1100 वगैरह ऐसा कुछ डेफिनेट पास हुआ जो एंड वाला है वहां पर, और उसके शेयर रिक्वायरमेंट है 1200 का That's what I say. Software can give you anything. इसमें तो सर सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर नहीं सही। जैसे चेन्नई मेट्रो में कमिश्नर ने जो था चेन्नई मेट्रो का, उसने कहा यार यू गार्डन में जो वॉल कंक्रीट की दी है ना ये बहुत खराब है, इसको ग्लास करना। अब उसको कोई क्या समझाए कि मतलब शेयर भी लेना होता है, यू नीड टू हैव अ वेल। हाँ ठीक है, करके लाते हैं लाया ना फिर कोई से ऐसे। लेकिन दिल्ली का दक्षिण ओवर थे ना, संदीप संदीप दबाव भी होता है स्पेक्ट्रम में तोड़न का। हाँ उनका उसी डायरेक्ट क्या है, अपना अपना हैंडओवर देखिए उसी का देखे आप हमारे डिपेंड होता क्या थे क्या सारे काम मंगेश सर के साथ मैं काम करता था ऐसा, मतलब काफी अच्छा इंटरेक्शन। अभी भी स्पेक्ट्रम शायद मेरे को 2-3 कभी कभी कई कई प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं जैसे कि ये स्टेशन it's you see this output that I wanted to show you one last thing. तो क्या इसमें क्या मैंने एक्सपोर्ट किया, जो हमने जो मॉडल किया था ना उसको मैंने एक्सपोर्ट किया। काफी सिंपल आउटपुट है SYHP1, इसमें कुछ ये नहीं है कोई, तो इस से अगर जनरेट करना है तो यू कैन पुट अ लूप फॉर दिस एज वेल enable, okay, you can go with this axis 1 2 and 3, okay, and the references were like the names were G2 syntax what we saw PTU SS, that was in the tabular format, but now this is in a line format, okay, but the input is same that you have given over there in. So now here after that the definition construction stage over there is over here, so you can simply copy this and start defining each of the tendons separately as well. You don't need to put out, is what I want to convey. Comparison of the graphical user interface. I did not want to stretch a lot actually, I know this happens. right one what you did here It is auto-generated name for that tendon. See, when you export, that time there will be no variables. right such a long very
such a long string, I'll say there might be some format to it. I don't know how it works. So what we collect first half, that's fine. So let's do that. जब हमें जब तक हम Start working over a project. There's already tutorial available, and also I am available. Complete a project and set this system once. What you need to do is SSD. Let's say 20 spans. Okay, then you need socket plus 5. Rest all things in SSD, temperature definition, construction. It is only one time definition thing. That is all. But the way I showed you, the report was getting generated. If you have that in that particular sequence, you don't need to understand what it is all about, the geometry that you model correctly and the loads you apply correctly. So in load combinations, then you need to simply model loads, keeping in mind that you have to put it in that particular action so that finally load combinations is also automatically done. Okay, fine. Thank you. इसमें मैं वो टेंडन लॉसेस भी देख सकता हूँ देख सकते हैं ग्राफिकल उसमें बाहर गया वो सब रिकॉर्डिंग तो की होगी ना सारी Okay, so thank you. Yes, meet at 10 a.m.